Good morning, everyone. Am I audible? Yes, you are audible, madam. You are Yes. audible and visible too. Thank you. Good morning, my dignitaries, my colleagues, and my dear students. Welcome to the third day of the Student Induction Program organized by Haldia Institute of Technology 2023. Today, we'll begin our session with the orientation of PPU cell with our keynote speaker, Professor Dr. Sushmit Maiti, sir, General Manager, Training and Placement. Over to you, sir. Madam, thank you so much. Let me start off with my session. Students, a very good morning to all of you. And once again, most welcome to Haldia Institute of Technology. Thanks for giving us a chance to give the desired services academically and in terms of training and placement. So myself is Dr. Susmit Maiti. I have been with this college for last 18 years. I have joined in this college for in the year 2005 and still continuing in the profile of general manager training and placement. Earlier I was a faculty in department of IT, associate professor in department of IT, and now that I have to take the charge of training and placement and for last 10 years. So what I'll try to do is that I'll try to my session will be divided into few sub sessions wherein in the primarily I'll try to give my students an ambience or the requirements of the academic structure or how we are oriented at this end, and then after how does training and placement, what are the roles and responsibilities of training and placement to shape their career, and then some recommendations which are very important to note as students need to take the preparation for a job orientation right from day one itself. So, madam, am I audible to all? I hope that I am audible and loud enough. Yes, sir, definitely. Okay. Basically, I will tell you, my students, that as you see it as a college, so we from the college side, we have got we have got a capacity of around 1,500 plus students studying in our college in each year with a total count of 5,500, and they are all spread across several schools and departments. So basically, the means you outsiders or people from outside, they look at the college as a single entity, but we look at the college as three schools exist in this college. One is the school of IT, wherein the participants are BTech in computer science, department of computer science and engineering, department of information technology, department of ECE, department of computer science and engineering with specialization of data science, AI ML and cyber security. So this is one school, and the second school is the School of Core Engineering, which consists of Department of Electrical Engineering, Civil Engineering, and Mechanical Engineering, along with Applied Electronics and Instrumentation Engineering. And the third school that exists in our college is the college for, school for life sciences, which has got biotechnology, food technology, and chemical into it. So this is how we are oriented internally, but outsiders, they look us as a college. And means as we go for training and placement orientation, that there is means this is a clear thick line of difference between the placements in core engineering and placements in IT sector. They are means their dynamics are different, their processes are different, their growth perspectives are different. So that is the reason that we prefer to differentiate these two type of core placements. But again, the navigation from core engineering to IT placements are allowed, wherein the reverse is not allowed. That IT department student, I've never seen an IT department student going for a core engineering department. Very few. It doesn't happen. It is not that it doesn't happen, but those are very rare cases. So as I differentiate between the core and the IT sector, so the placement space, this differentiation is being triggered by the experience that I carry for last 10 years into the training and placement cell, and their dynamics are really different. So about the training and placement activities, let me tell you that our training and placement activities are very definite. Uh, like I'll tell you that three fundamental responsibilities. One is the training, the second one is the internship, and the third one is the placement. So these are the key responsibilities of
training and placement department or training and placement cell, and along with there are several other ancillary responsibilities of training and placement where we will try to groom you. Grooming is one of the very important area wherein we emphasize on, because the better is the grooming, the better is my selection counts. So grooming is one of the area wherein we keep into focus. The second one is industrial visit. We try to take you to the industry to get an ambience of the industry as well as higher studies. Means those who opt for higher studies after the 3 4 years. So means they need to also be focused with that. Means they need to be aligned with that particular philosophy of thinking. So now that these are my key responsibilities of the training and placement cell. As for the placements, everybody wishes to go for the results, not the practices or not the process. So the results for last few years has been remarkable, incredible. From our perspective, like I'll tell you that last to last year, the IT sector has been booming, and we have got placements around. Last year, we have got placements around 1,700 employment offers, which has been provided to close to 1,000 students out of a batch of 1,200, and then after others going for higher studies and apprenticeship and all. So now, as you could see that last year the count for Capgemini was 283, the count for Cognizant was 246. As you could see in our website or in our banners, that you could see that means it was really really remarkable. But again, I repeat that not every year we get these kind of remarkable placements. But yes, true that means once you possess the technical skills, so means it becomes easier for us to get these records established every year. So, other than that, the regular recruiters, let me tell you a few regular recruiters in the IT sector. Cognizant is one of them. We are very closely attached with Infosys and Wipro. Then after Cognizant and Capgemini, Mindtree, Tech Mahindra, PwC India, PwC US, and all mass recruiters. Means it is very easy for me to tell that who all we are attached with. Rather means attached not with. Rather telling that who all are with we are attached with. We have got we are really means companies like Microsoft, Intel, Facebook. They do not come to our college, but still we are means trying our putting our best efforts to bring companies like them to our campus as well. But it has, I've seen that means students those who go for Infosys after working there for 2 years, they are placed in companies like Google as well. I will tell you about one of my students from the batch of 2017 or 18. He merely could get an offer in Wipro, and then after he right now is placed in Google with a package of 1.2 crores, and there are several means success stories about it. People after getting 1 or 2 years of experience, they go into companies like Intel, Google, Facebook, Microsoft. So there are instances. So, but yes, means we do not get them right now, but again means we may get them. Means we are putting our best efforts to get companies like them into our campus. Apart from that, in the core engineering department, once again, I'll tell you that you name any company which has got a setup, industrial setup in the eastern part of the country, we are almost, we claim that we hit all the companies that are prominently established in the eastern part of the country. Like I'll tell you that Berger Pens is one of our recruiters, JSW is one of our recruiters, RPG Group, Philips Carbon Black is one of our recruiters, Reliance Geo BP. So we get all the big names into our campus. They recruit in good numbers. Like I'll tell you that Reliance Geo, Adani is one of our recruiters that they recruit. But only parameter that I'll tell you in the suggestion part that students need to be focused on that relocation should not mean if somebody is telling that I really want to get established in or settle in Bihar or in West Bengal or in Jharkhand or in so limitations, giving a limitations brings down the degrees of freedom, and you know that these companies they have got setups pan India, and they try to get candidates those who could relocate in a pan India basis. So my students are working in cement companies in Shillong, in Meghalaya, in remote place. My students are working in Jammu and Kashmir. They are working in Pune, Infosys, Hyderabad, Bangalore, Chennai, Coimbatore. So you need to be flexible at every point of time. So this is what earlier students have been flexible, and they have got placements. So they have built their career in this phenomenon. Going forward with means the dynamics of the
placements. So let me tell you that everybody remains concerned that whether I'll get a placement or not. So while taking admission, so they prioritize things that prioritize a college that how better the placements are. So people love to judge a college by the placements that they give. But again, I repeat that it is both ways. That it is the academic standards that we possess, means we take the credibility of putting the academic impact to our students along with the training and placement factor. That means we are going to give you the academics as well, and along with we are there to place it. So these are the both the facilities we take it with priority, and that is the results that we are getting for last 4 5 years are really remarkable, and this is the reason that why we are getting it. So what we expect at this point of time that you might be judging a college only by the placement scenario or the placement statistics. But what I will insist upon that now that you are into the system, so judge our college by the academic standards as well as the placement statistics. And the placement statistics goes on like we are close to some years we are close to 80%. Some years we are above 90%. Last year we were above 90% placement. We had above 90% placement, and you know that it is not easy to get 90% placement unless I get the desired support from the batch which is passing out, right? So while I'm telling about the support, I mean that it is not a support like of a democratic kind of thing, but the support should be in terms of the technical ability, the technical skill set that students are possessing. It becomes very easy for us to place somebody who has got the right technical skills, right? But I'll give you a phenomenon that means what used to happen in training and placement earlier and what is happening right now. What used to happen earlier was that people used to companies used to select a candidate, a BTech candidate, by looking at the scores of 10, 12, and the aptitude. Aptitude is good means to the company that he is ready to learn. He has got a better score of adapting new things or learning new things. But now they have changed the paradigm. For last 2 3 years, they have changed the paradigm and they have completely made this aptitude-based selection process and has converted it into a skill-based recruitment process. That means if you possess the skill, so you are into the selection, and if you do not possess, so you are out of the. So the basic idea is that right now for last 2 3 years, and it will be prevailing for next 4 5 years, that it will be a skill-based hiring and not a regular means aptitude-based hiring. Please interrupt for 1 minute. I am interrupting for 1 minute. স্যার আমি তাকে দিচ্ছি অনুপম স্যার হচ্ছে শেষ স্যার এই প্রেজেন্টেশনটা নিয়ে একটু হ্যাঁ বলুন অনুপম স্যার না okay. Well, so I hope that earlier it was aptitude-based selection process. Now it is skill-based selection process. Now, as I tell that skill-based selection process is a bit different from aptitude-based because you need to learn. Means for IT sector, it is a must that you need to go for coding. That is the skill that you need to acquire. Whatever may be the language, whatever may be the tools. So companies expect that you learn languages, you learn tools during your academic these few 4 years. Let me tell you. Let me break few of the wrong thinking that we are having. First thing is that judge a college by the academic standards as well as as well as the placement statistics. The second one is that you all feel that whether I'll get a job or whether I'll not get a job. So the question as an outsider is okay for me, but while you come into the system, so we take it in a very different way. That getting a job and not getting a job, it is a binary kind of thing. That whether it is yes or no. But again, let me tell you that the concept is not binary. The concept is a bit of fuzzy kind of thing that wherein you cannot answer in yes or no. So our objective is that it is not getting a job and not getting a job. It is means we classify this question into two subsections. One is how better you get a job and how good you get a job. So if you invest your efforts for next 3 years, 4 years, it is definite that you will end up with a better kind of job. And if you are investing an average kind of effort, so you get an average kind of job.
And if you do not effort your means do not invest your efforts, so you get a average kind of job. So means less average kind of job or less good kind of job. So you need to understand. So basically, placement is not a yes no answer, but it is a fitment problem. The better you put your invest your efforts, so the better job you could get it. Even I'll tell you that means somebody might be thinking that I have not scored 60% in my higher secondary, or let us say that I am very poor in mathematics, or let us say that I'm not that good in chemistry. So these all parameters goes on in your mind as you take an admission in BTech. But trust me that these all factors they move off as long as you take it with priority, right? I've seen plenty of non-criteria students less than 60% bagging a job better than with a highly criteria student. So these paradigms means what you have scored in 10th and 12th really does not, yes, it is required, but again does not put much effect in your placements. So these things you need to remember that means how better you get a job and how worse you get a job. So this phenomenon is a placement is a fitment problem. It is not a yes no problem. So how better and how worse, how good and how bad. How the second parameter is that how early and how late. So the early you get a job, so that you remain relaxed for next 1 year. The placement season really starts in the end of sixth semester and completes within seventh semester for the IT sector, and it goes beyond seventh semester for the core sector. Even we continue the session unless all of my students are placed. So after passing out also we give them. We take candidates means those who are placed in some company. We place the placed candidates as well. Means, because companies, you know that they require fresher candidates as well as they require experienced candidates. So while they require an experienced candidate, we try to keep the licensing with the alumni, those who are working in less prominent company. We try to put them in better companies. And so this is not actually a time-bound process. But again, from the student's perspective, so you need to understand that the early you get a job, so you could relax for next 1 year because you know that a job is there in your hand. Now you could redefine it and go for how better you could get a job. So we classify whether I'll get a job or not get a job into these two sub problem. How better I get a job and how bad I get a job, and how good I get a job and how early I get a job and how late I get a job. So for us, getting the job early has got merit. For us, getting a better job is having merit. So this is how we classify this problem. So now onwards, do not put into your mind that whether I'll get a job or not. I have not seen much candidates, those who remain unplaced, passing out from our college. Very rare occasion, even when there are restrictions for movement, sir, Hyderabad nahi jayenge, sir, Delhi nahi jayenge. So these all cases do restrict me, but rest I think that anybody who is desirous for a job, who is open for a job, do get a job from our college. So this is what I could remember from 10 years of my service in training and placement. The next one is that means what the mindset that students have at this point of time is. Acha, chalo, first see how it happens. I'll tell you. First of all, I'm also breaking another means wrong thinking from the student party that it is correct that BTech course is of 4 years, but for us, from the training and placement perspective, the BTech course is of 3 years. Make it a point that it is of 3 years because your placements will start only after third year. You have to move for internship after third year. So the first year, what I have seen, students, those who take admission, they settle down. They take time to settle down in our college. The physics, chemistry, mathematics, or applied science subjects will be there. Some IT impact will be there. So this is how we are oriented in the first year. In the second year and third year, you are directly into the department, and we give the technical impact in the second year and third year, like data structures, DBMS, operating system, other coding languages, machine learning with Python. So we all give, I'm talking about the IT sector departments. So we try to give you the impact of academics in the second year and third year, which I'm talking about the IT part. And at the end of the third year, we expect that you be ready to deliver. So now that the companies they get into our college after the third year, or let us say like tomorrow we are having the campus drive for Accenture. Just think about it. So we are into the seventh semester, early seventh semester, and companies are pitching into our college. We are having PwC campus drive on 20th of this month. We are having Flipkart campus drive on 15th of this month. So
companies that teach in only in the 7th semester. So whatever you need to do, you need to do it before the 7th semester. So the exact impact that you need to do is need to give yourself is second year and third year. So first year, take your own time, settle down, go for the basic the subjects like physics, chemistry, mathematics, and other C, Python. So all the basics one. Second year and third year is the once again the means from the training and placement perspective, we try to give the impact. And early end of third year, you should be ready to deliver, and you have to get a job. So for me, the course is for 3 years, and for you, the course will be for 4 years. So you need to keep it in your mind that whatever you need to do is within 3 years. And 3 years time, what a student has got a mindset, अच्छा चलो देखेंगे second year में जाके देखेंगे, third year में जाके देखेंगे. So it is this shift or this postponement of your doing. If you postpone it, second year में नहीं हुआ, I'll try to do it in third year. Student has got a typical mindset of this kind. My suggestion is that if you think of this type, for training and placement will be compromised. I don't know about other parts, but I'll tell you that if you have got this mindset that आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, so I'll tell you that this mindset is going to compromise your training and placement processes. So this is a strong recommendation from training and placement that you need to do it now every time. Do small, but do it now. It is not that, see, I'll tell you that BTech is not rocket science, right? Means we have taught for last 18 years, and what I see is that these are very, very fundamental. But again, if you stagger or if you try to accumulate or if you try to do today's task tomorrow, so it accumulates before the exams, the entire task accumulates and you need to flash off the entire task. After all, the burden the burden accumulates and puts a huge load on a student, and at that point of time it will be, I'll tell you that you will try to escape by telling ठीक है इस semester में तो नहीं हुआ, अगला semester, this अगला semester में जाके भी नहीं होगा. If it really needs to happen, it needs to happen now itself. So my suggestion to my students is that think in a different way, do small things. It is not rocket sciences, so do very small things at every point of time. It is not that you have to be into academics always. There is other life, hostel life is there, friends will be there. Those are all welcome. But again, you need to carry on the academics in a very incremental way, in a small way, in a very fundamental way. And at the end of the day, you will see that at the end of the semester, you will see that you have learned plenty of things. So it is basically an incremental process and not an accumulated process. So you need to keep it in mind that every day is going to contribute. You may feel that 3 years, काफी time है, चलो कर लेंगे third year. Those who have thought in this direction has got their placements compromised. So our suggestion is that do not think in this direction. Always try to, whatever you try to do it now or never, right? And do it small. Think small. It is not necessary to think big at a single. Once you start thinking small, at the end you will see that you possess the capability to think it large. So you need to think small. One chapter, one concept, one problem will also add up to your success, right? Other few things, let me tell you that if you invest your effort, a job, you are going to land up with a job. If the problem lies here that if you do not invest invest your efforts and expect a job, things will be critical for you. So what we suggest the route is invest your efforts, expect for a job. And the point is that you know that means you have done good in 12. That is the reason that you could have, if you could have done much better, you could have gone for colleges like IITs and IITs. So the fitment is for Haldia Institute of Technology. Let us say. Then after, let us say that now we are not concerned with how better he was in 10th class. I have seen plenty of very, very meritorious students turning to be average, and I've seen plenty of average students turning to be as very, very meritorious in my college. So it is all about how you are spending these 3 years into the campus. It is not that what you are carrying with you. हमको higher secondary में 95% मिला है, 10th में 93% मिला है. So those things do not really contribute to the system, right? Yes, those are required. Those symbolizes that you are meritorious enough. But again, let me repeat that these 3 years of your stay in Haldia Institute of Technology, I'm talking about 3 years from the training and
placement perspective, from the academic perspective, it is truly 4 years. So these 3 years, what you are doing, how you are investing your effort is going to determine your next 30 years. Let me tell you that things are not very easy. You relax for these 3 years. Nobody is going to means now you have to take your own call. Students have to take their own call. So you enjoy for 3 years and get your next 30 years compromised. The reverse is you invest your effort for 3 years and get your 30 years relax. So the choice is completely personal. The choice is completely your family expectations, your own expectations. So means nobody is going to means I'm telling you that nobody is going to tell you these directions. One has to individually has to take the call that you invest. And our proposition is that invest your efforts for next 3 years and enjoy for next 30 years. And I've seen plenty of candidates, those who are average. I'll give you one single example that that last year, one of my candidates had a rank of 46,000, and that 40,000 somehow managed to get a seat in computer science, and now he has got plenty of jobs along with he has got a very good score in GATE and gone for IIT Kharagpur for higher studies. See, he's kind of say he was very average, but he spent his 3 years in a very meticulous way. So that is a suggestion that I'll give, that every time you'll feel like nahi aaj nahi kal nahi parso. So every try to get rid of this kind of mindset. And the second one is that it is not that what you are carrying with you. Those are really required, but not very essentially required. So how you are spending this 3 years will definitely determine your next 30 years. So students, please be very cautious, be very skeptical that one day is also important. What I've seen that होली के time पे घर चला गया, 7 days relax. So this casual approach is going to contribute at the end of 3 years. I'm telling you. There are candidates, those who tell me that, sir, if I fail in GATE exams, then I'll look for a job. So they are very, and they succeed in GATE exams as well, right? So that is what I can tell you, that try to take this mindset, try to possess this mindset as you step into our college. Try to keep this in your mind that one day, 1 hour, 1 minute is going to contribute in the means think small. Those are going to enlarge your success at the end of the semester or end of the year. Now let me come for the other few dynamics of training and placement, that how means which job we call it as the best job and which job we call it as an average job, and what are the packages, and means what we insist upon that the students should pursue. See, let me tell you that as we take up a class, so we really find out that though means who all fits the industry in a better way. So I've seen plenty of candidates. One of my candidates from the year of 2020 or 2021 got a job in Amazon with a package of 45 lakhs. Last year, two candidates got a job of 32 lakhs. So package is one concern. That is means those who are meritorious, who are able to grasp up new technologies. So what I will suggest is that you may go for packages. But rest others, means we suggest that money should not come while we choose a job. But again, money is definitely a factor. I will not leave a base. Nobody is going to. If I get a 45 lakhs package, I will definitely discard a 5 lakhs package company. So that is true. But again, chasing the packages is good for confident people. But for average people, what we suggest is that go for a average. We try to learn. Means what we for a company, how do we rate a company? I'll tell you that why Infosys is a good company for me and rest are not. I'll tell you that they have got a very good training scheme, that they hold the seniors hold their hands very firmly. They have got a very good learning environment. After all, means they treat their employees with very cordially. So these are the few things which we look for. They do not give a very good package, but they treat the employees with priority or with dignity. So this is what we look for in a company, that not besides the package. Package definitely is one of the parameters, but besides the package, we look forward for the culture that prevails in the company. So in the culture, there are companies those who are very ruthless. I'll tell you that means they pay you package 50 lakhs per annum, but again they are very ruthless. If you are means if one month your performance goes down, so you are out of the company, and this is how it goes on. So we try to find out companies those who are good package givers, as well as the cultural fitment. We look at the cultural fitment with priority. I'll tell you that the cultural fitment has to happen.
So this is how we rate a company. And the second one is that which I'll tell you that which job we look for as the best one. That what we insist upon is that means I've seen my toppers for last 18 years. I've seen that they join a company like let us say that Amazon or let us say Google or let us say Synopsys, Intel, Qualcomm. So then after 2 years of experience, they go for IIMs or IITs for MS, PhD or for MBA, and or they look for a government job. So these are all okay with us. But again, I'll tell you that if you could, means for me or for the training and placement cell, I can tell you that getting a good score in GATE exam is the best job that one could give to himself. Because you see that getting a good job, means a good score. While I'm talking about a good score, so I mean that. Means a rank within 500 in GATE exam is really a good score. All India level basis, so a rank within 500 is a good score. I'll give you one example that last year one of my candidate from chemical engineering, he got a GATE score of 322, got a package of 8.2 lakhs in Haldia petrochemicals, and then after he has switched to Indian oils, these PSUs. They have got options. I mean, those who are having good ranks in GATE exams, so that they have got options to enter public sector units, central government public sector units, or railway, or BHEL, SAIL, NTPC. So those options are there, and that is the best kind of job that one could provide to himself. Apart from that, in the private sector, let me tell you that in the IT sector, there are really there are good package givers it's like I told you that Google, they pay in crores, Facebook, they pay in crores. Then after other companies like Synopsys, they give it in the range of 10 lakhs to 15 lakhs. Some evolving systems. There are startup companies, those who some you do bikes. So they give a package of packages are average. And then after that, the next one is that cultural fit went bad and the packages are rock bottom. So this is how we classify the jobs, and we wish that one should prepare for. See, if you prepare for GATE exams right from the beginning, the benefit that you get, that you get a job by virtue of the knowledge. So and that is the reason that we all insist upon that try to get a good GATE score, because we know that if you cannot get a good GATE score, the job will be waiting. You have got the skill set, and the job will be waiting for you. So you try for the GATE exams, and the job you will get. And but again, the try has to be a very sincere try. The try has to be a very dedicated try, a very committed try. And you know that once you prepare for GATE exams, you get to know all the complexities, with all the detailed problems. Like I'll tell you that you study for JEE mains, and you clear the next category of exams. So the same thing that or let us say that the higher secondary exams, you study for JEE mains and the higher secondary exams are already clear. So similarly, that you try out for GATE exams, and you know that the usual academics will be clear, the placements will be clear. So the better approach is that we always insist upon that students should take it with priority from day one itself. Try to not all subjects. If you are not feeling interested in all the subjects, at least 2-3 subjects that you are having in the GATE curriculum. So if you try for it, by virtue of the GATE preparation, you will have plenty of experience in the skill set, and definitely you will be able to get a job. So that is a recommendation from our side, that always, every semester, everywhere, try to see the GATE problem map. This is what I have studied in the first semester. What are the problems that has come in the GATE exam? And if you keep on doing these two things parallelly, I am telling you, once again, I am telling you that you will, if not, you will end up with a good score in GATE exam. You will definitely land up with a job. So this is the process that we suggest, that always go for GATE exams, always prepare for with respect. And apart from the regular, see, again I repeat that the fundamentals are required, the academics is required, but apart from that, see, you have to run the extra mile. That means from the day one itself, that unless, means if you run the extra mile, so you acquire the skill set. You have to go beyond the curriculum. You have to go beyond the curriculum, means let me tell you that you have to go, you can prepare for GATE exams. Few students may go for certifications. I've seen plenty of students, those who try for certification, NPTEL certifications. Those are really required during the job interviews. That certification, but again, certification from means not all certificates are accredited, or let us say are acknowledged. Certification from NPTEL, or let us say Udemy, or let us say the C3 schools or W3 schools or something like that. So these all certifications are very advantageous for you to get a job.
So as you step into our college, so keep it in your mind that you have to go beyond the curriculum, because jobs means then the probability of getting a job increases. If you restrict yourself within the curriculum, so the probability is also restricted. So choice is once again yours, that the candidates, that if you go beyond, so time is there, people are there, means we faculty members are always at the benefit of the students. So we will help you out. All departments will help you out. And what I suggest is that go for some extra mile, means get yourself mentally prepared to walk the extra mile, to take the extra load, and to go beyond your curriculum. So these are the few things that we could suggest from training and placement cell. Get yourself used to, get your mindset as you step into the college. So get yourself means used to with this mindset. And definitely, I think that one who I've seen plenty of candidates means passing out every year, 1,500 candidates passing out every year, and I've seen that means confident people, they really do not bother whether they get a job or not. And means our thinking is that if you are confident, the probability increases by many times of getting a job. So try to get yourself confident, try to get yourself within the academics, try to get a, I'm telling you that the friendship is required. This is a hostel-based college. You will get to means used to with friends. You will have several other chapters, other all cultural events. That those are also required. But again, these are also few things that you should remember. Parallelly, these should go on. Nothing should be dedicated. I'll tell you that academics, training and placement orientation, cultural means all engagements, all are required to for a means. I'll tell you that means are required simultaneously. All impacts are required simultaneously. It is not that only studies and no friendship. It is not that only friendship and no studies. So all parameters are required simultaneously. So that is all from my side. I hope that I could give you some orientation about the means um, about the means training and placement activities. Other things, let me tell you that very petty, but you'll be requiring some will be requiring that some loan documents to be provided. So anything that you require, simply drop into our department. We are there to facilitate you at any point of time. We are a big department with 11 managers, and you know that we are there to serve you at any point of time. So feel relaxed. There is nothing to worry about. Only thing is that how you are spending these 3 years is to be worried about. Rest everything, we are going to support you in all phenomenon, all different directions. Not to worry. We are a zero ragging campus. We take care individually. And all hostel activities, they go on very smoothly. And I hope that I am proud to tell that you are into safe hands and do not nothing to worry about. Simply step into our college with an open mindset, and the means recommendations that I've given right now, try to cultivate it throughout the process. We see, I'll tell you that we will meet you in the initial days, and we will meet you in the ending days. We do not have much link in between. Again, and a few things, let me tell you that we have a means provision of a 6 months internship in the 7th semester and 8th semester after you get a job, or before you get a job. It means you have to spend 6 semesters, say 6 months in a industry. So it is mandatory for you, and it is creditized as well. So it is not exactly in 7th semester or 8th semester. It is spread across 4 years, and it depends on the departments that you are attached with. And every department has got a different system of sending their students. But again, out of the 4 years, you need to spend 6 months into the industry ambience. So this is all from my side. I can tell you that you are into safe hands, and congratulations to all of you. Convey my regards to your parents for choosing Haldia Institute of Technology to serve you for next 3-4 years. So that is all from my side. Any queries, or I am Sir, welcome. Sir, sir has a question for you. Probably. Sir, there are around Pramod sir, any queries in the chat box or in the Yes, sir. Am I email audible? format? Am I audible, sir? I hope I'm audible, sir. Yes, sir, you are audible. Pramod sir, am I audible? Yes, sir, you are audible. So, sir, there are some questions in the chat box because most of the students are in the NUT. So,
they want to know basically the placements in the core subjects like non-CSIP subjects. Okay. Understood, sir. Sir, see, let me tell you that all big names that you get in the eastern part of the country. So, like I'll tell you that Berger Paints, JSW, Reliance, Adani, those who have got setups in this part, as well as logistic companies like Aegis Logistics, TMIL, Haldia Petrochemicals, Imami. These companies from Haldia, all they come to our college for placements. Companies from the eastern side, we generally get them. I'll tell you that one of my backlog was CEHC, RPG Group company, RP Goenka group of companies. But again, we got that last year itself, and this year also it will be continuing. So all renowned names in the eastern part of the country, we get it. Other companies that we get it is that we get a major contribution from the western part, from Mumbai, Pune, Gujarat, Ahmedabad. We have got one of our company named as Gujarat Ambuja Exports. We recruit 35 candidates every year from our college. We have got Simplex Infrastructure in civil engineering who recruits 50 candidates. We have got Procon Engineering. Last year they have recruited 25 candidates from civil engineering department. We have got Biking India civil engineering department from Delhi. We have got SA infrastructure from Delhi. So there are these core departments also. We are equally competent and equipped to give them the placements. But again, let me tell you that in core department placements, two things we need to remember. One is that they are not mass recruiters like Cognizant and Capgemini recruiting 300, 250, 283, 246, 170. So they do not recruit in this fashion. So they recruit in numbers like 10, 15, 20, 25 at most, or 35 at most. And in general, what we have observed is that the package is a bit in the lesser side than in comparison to the, like I'll tell you that in the average package for IT sector is 5.75 or 6 lakhs. So the average package for core sector is in the range of 4.5 to 5 lakhs. So these are the two different other companies from Hyderabad. They visit us, like the vaccine manufacturing company. Bharat Biotech is one of our recruiters. We had the campus rate for Z4 Life Science. That is a Chennai-based company. HCL from Chennai. So they all recruit. Means we get the recruitments across pan India. But again, I repeat that what I am expecting. Anupam sir, could you put yourself mute? Anupam sir, could you just put yourself mute? Yes, sir. I have Okay, so now that means students or maybe means candidates those who are desirous for a better job should be prepared for pan India location. I've seen plenty of candidates coming and telling me their crisis, sir, Papa ka tabiyat theek nahi hai, sir, Mummy ka cancer hua hai, sir. These crises do not work while we go for companies. I'll tell you, because you see that 1,500 candidates will have 1,500 crises in their family. So it doesn't really work. But one who is good in, means who has got a skill set and ready to relocate. Relocation is a very important issue in core sector. That maybe they are posting you into Ahmedabad. I know one of my female candidates being posted in Bunda Port in Gujarat. So if you start telling that, I know that PCDL they give the posting in a rare part of Maharashtra. So Procon Engineering they give the posting in Vapi. That is a very remote place. So this we need to have used to with the remote places. Not all companies will give you the posting in cosmopolitan or metropolitan cities. So we need to get ourselves prepared for relocation and relocation in remote places. Because not see the idea is that you will not have factories inside a city. So it will be in the outskirts of the city. You will not have projects, let us say a railway bridge, will not happen within the city. So it will be in a remote place. We will have a tunnel, will not be constructed within a city. It will be constructed in hilly regions. So we need to have, we have got candidates working in this New Jalpaiguri and Gangtok flight corridor. And it is a very remote place. So you need to get yourself adjusted. These terminals, these logistic terminals, oil terminals, they are all located in outskirts. So you will not have, so students must be used to with, I'll tell you that one of my companies, again, one of my companies is there in Madhubani, Gitidi. Right, there is a carbon company. So companies, they have got their own locations and we need to accept that this remote parameter. Second one is that there are few hazards for like cement companies, you will have dust. Carbon companies, you will have dust. So students should be used to with it. That you cannot expect a cement company without dust.
You cannot expect an iron and steel company, Rashmi Metallics. So it is full of iron ore. So these all the health parameters, relocation parameters should be adjusted upon. So and one cannot expect that an iron and ore company and there will be no means flying ash or flying components. So these things one should be used to with it. Companies they run in a different way. Students they are new to the domain. So once they go for internship, they will learn plenty of things. Once they go for industry visits, they will learn from those parameters. And then after, only thing is that the mindset has to be prepared that we are ready to relocate in any location. Other than that, if this is not the constraint, I hope that we have got a very decent placement for code engineering departments as well. I'll tell you that out of mechanical engineering 180 students, we place close to 150, 160 students. Then our chemical we give full placement, instrumentation full placement, civil we find lack of candidates. Electrical also we could be able to give a decent placement, close to 100%. So this is, but again I repeat that the packages are in the lesser side, the median will be less, and the numbers for each company, the number of companies has to be more, so that the recruitments are in terms of 10, 15, 20, or at times 5, 7, 10 also. So I hope I could tell you a few things about the core engineering placements as well. Sir, there are two questions. Ah. One is, what is the scenario of internship in HIT? We try to, I'll tell you that it is a 6 month internship. We try to confirm that a 3 month internship be provided to all candidates. And then after we try to take them in the transit, during the transit, let us say that when a student is passing out first year and getting involved in, means going for the second year, during the transit, during the semester breaks, we try to put them into a 1 month internship. So this is how we manage the internship kind of thing. We generally expect some payment from the, some stipend from the company side. The stipend ranges from, let us say that 10,000 rupees to 1,10,000 rupees. I know two of my candidates also have done a internship in Amazon from CSE department and EC department, and they have got a stipend of 1,10,000 per month, and they have earned 6,60,000 in the total internship of 6 months, and they have closed their education loan at one go. Before they ended up with the so this is another mechanism to earn few things. Like for MBA candidates, I'll tell you that for the last semester, we always recommend that you have to earn your money and you have to give the educational fees. Your parents are not going to give you. So this is the trend that we have started off late. But again, I will tell you that if somebody is desirous about it, he can share 1 month course fees from his own pocket. So there is one more question. Can you recommend specific programming languages, tools, or technologies that are essential for CSC core placements? See, I'll tell you that this is a very good question. That that companies they recruit depending on their demands. Generally, we focus on in the curriculum that we try to keep Python. C programming is a must. That will be taught in the curriculum itself. Python is there within the curriculum itself. Machine learning with Python is once again there. Java is there. And after all, beyond this, let us say that Java is there, all these parameters are there. So the languages they will take. Beyond this, that what we suggest is that one should be specialized. Like data science, they should have their own skill set. Like let us say cyber security. They should, once again, let me tell you that even after 18 years of my experience in teaching as well as training and placement, we also get to know different things. I'll tell you that cyber security. So I had a notion that these all departments might be requiring some expertise in ethical hacking or some cryptocurrency or cryptography or something like that. But the basic portion that I have learned from one of my students, those who are working in cybersecurity, I have interacted with plenty of students working with cybersecurity, and they suggest me that the website designing is much more important than all these parameters. The reason is this, that all things happen through website, and that unless you make a website, unless you build a website, you cannot break a website. So website designing is one of them. And then after we started Angular framework training program, we started Big Data Hadoop training program, we started off with Java, is all the advanced level topics. So, but again, let me tell you, what we insist upon is you have to have command on coding. One has to remember that coding is very, very essential to clear our campus, right? It is the coding is a determining one. And most importantly, people may be good in Java, people may be good in
See, this time is once again a constraint. I'll give you an example that tomorrow we are having the Accenture test, and I was going to the grooming part very recently. That I told that somebody I've seen in the grooming that somebody doing that programming in Java. So I suggested them that we will really are not confident with Python. Python is a much smarter language with a very rich library. So what I suggest is that doing two programs within 45 minutes will be challenging if you take it in Java, but it will be very easy that if you take it in Python. So we suggest completely that one has to have a complete command over Python. Then after you go beyond it, but Python it is really required. That means or else while you are going for time constraint, the richness of library is once again required. Earlier, what we used to tell that okay, you have to do it in Java or you have to do it in C++. So those things were there. Now we suggest that since time is a constraint, 45 minutes to coding. So we suggest that one has to have a complete command over Python as a language. So that is a much smarter language, much easier language with very rich library. So that is what I could suggest my students. Sir, there is please tell something about full campus placement. See, pool campus placements, it happens in my college, but we really focus on the dedicated kind of thing. Means we try to bring companies into our campus, but again, pool campus placements are required. I'll tell you that at times we go for pool campuses for Infosys, IBM as well in somewhere in Kolkata, and the recruitment. Means I'll tell you that what happens actually while the company has got less requirement, they go for pool campus. They do not visit individual colleges. While the requirements are large enough, so they visit individual colleges. So we have to participate like companies like IBM while they have got less requirements, so we have to go for full campus kind of thing. So this is, but unless required, we do not go. But that is not a sustainable model. We do not take it as a sustainable model. Is we take the dedicated campus as a sustainable model. We try to meet the companies that you see that a list of 137, 150 companies. Maybe out of 137 companies, we participate in full campus for 10, 15 companies, and the rest are all dedicated for our campus. Sir, one last question probably. Best 3 tips or suggestions for the new first year students from your end? Best 3 tips. One is that coding. You have to go for coding. Coding has to be within your blood. So try to take it for core engineering students if they really wish to venture out for IT companies. Looking for the packages. So what I will suggest is that emphasize on coding. This is number 1. Number 2, right attitude. You need to have a right attitude right from the beginning. If you are having, again I repeat, what I am telling, attitude means the mindset. Do it now. Whatever I do it small. Whatever I do it, I do something. It is not a zero, it's non-zero impact factor every day, every now. So that is what I am expecting from my students at this point of time. And the third one is discipline. Discipline is very much required. I'll tell you a very simple example that means how it happens. People think that I need to wear a tie. You see that that while people students they go for they wear the tie for the first time in 4th year. So we find out that they hesitate. They do not feel themselves comfortable, and people could easily make out that he is wearing the tie for the first time. So wearing a tie or maintaining the discipline is a practice and not a one-day affair. What students think at this point of time, discipline will make it up at that point of time. It doesn't really make it up, right? So you need to practice things. That you need to practice discipline to exhibit discipline. And other thing that I could find out is that I would suggest more very important. I tell my students always exhibit energy. Always exhibit energy in the positive direction, of course. But I've seen plenty of candidates, those who are sleepy, those who don't feel like doing their assignments, those who are frustrated, those who are I've seen candidates. So those things doesn't work out. Always exhibit energy. Even I'll tell you that your friendship will be will enhance, will be deeper, will be much friendlier if you exhibit energy. Even friendship also. Academics will definitely enhance. I'm talking about friendship. If you exhibit energy, friendship will also be much more friendly. So always exhibit energy at every point of time. So this is my few suggestions that I'll discipline, exhibit energy, and go for coding and right attitude. So these are the few things that I'll.
and think small. Right attitude means think small. Although there is no need to think big in BTech curriculum. Right. So that is all suggestions from my side. Thank you so much, Ashwit sir, for encouraging our students and showing them the right way to success. Thank you once again, sir. Thank you. And So I'm taking a leave. Thank you so much, all the faculty members, my colleagues. Thank you so much. I hope that I could take my students in the right direction, and hope students cultivate this for the next 3 4 years. Thank you. definitely, sir. Thank you so much. Thank you. Uh, we have amongst us our next speaker, Dr. Rashmi Singh. Ma'am, are you there? Yes, I'm here. I'll take just Thank you. 2 minutes to introduce you and then you can take over. Presently, Dr. Rashmi Singh is working as an assistant professor in the Department of Education at SS Khanna Girls Degree College, Central University of Allahabad. Earlier to this, she has served as an assistant professor, B.Ed, at a government postgraduate college, Hardoi. For her perpetual excellence in academics, she has been recognized with many fellowships and awards. She got awarded with the JRF and further with SRF by the UGC. Her alma mater, University of Lucknow, awarded her doctorate degree as the Best Research Production of the Year 2013 award for an excellent contribution in the field of adolescent girls' education. She is recipient of university gold medals twice for securing highest percentage in B.Ed and M.Ed. She has authored a book on adolescent girl, her concerns, coping and education. She has published over 19 research papers in national and international journals. Remarkable figures include 30 chapters in the edited books, co-edited 17 books, presented 50 papers in the national and international conferences, and attended 76 webinars, both nationally and internationally. Making her academic profile more volatile, covers 65 FDPs, 4 refresher courses, and 21 weekly workshops. 25 MOOCs across the globe from foreign universities enhances her knowledge bank. She has been presented her lecture 15 times as a resource person in national and international deliberations. Apart from having excellent academic credentials and volatile academic participation, her being vocal and teaching passionate made her to launch her own YouTube channel where around 3,000 subscribers get benefited with her regular deliberations. Thank you, and over to you, ma'am. Thank you so much, Dr. Soumya, for a warm welcome to me. And I'm here to present a topic over NEP 2020 on technical education in this student induction program. So, without wasting time, may I start? Sure, ma'am. Okay, thank you. One minute. Now it is. It is visible. 1 minute it will take. When it will be visible, please inform me. Yes, ma'am, it is visible now. Okay, thank you. I make it full screen, okay? Sure, ma'am. It is clear now? It is Yes, more ma'am. clear now? Yes, ma'am. Okay. Thank you so much, everyone. And here I am to present a topic on rejuvenating technical education in the light of NEP 2020. And as all you know that I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education in the SS Khanna Girls Degree College. It is a constituent college of the University of Allahabad. So let's start. First of all, I will make it bilingual for greater understanding. Is it okay? Yes, ma'am. Okay.
तो हम लोग बात करने जा रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा टेक्निकल फील्ड के होते हुए भी कि एनईपी 2020 पे जितनी बात इस वक्त हो रही है हिंदुस्तान में, उतनी बात कभी किसी एजुकेशन पॉलिसी पर नहीं हुई। और एनईपी 2020 जैसा कि हम जानते हैं ये 2020 में आया है और दिस इज 23, बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन एंड चैलेंजेस अबाउट इम्प्लीमेंटिंग एनईपी 2020 बिकॉज इट इज सो यू कैन से रिवोल्यूशनरी सॉर्ट ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी that every educational institution has shared so much pressure, so much apprehensions to implement it. तो शुरू करने से पहले हम लोग बात ये करते हैं कि क्यों एनईपी 2020 पर इतनी बात ही की जा रही है, या क्यों ये पॉलिसी पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम उसने रिजुविनेट कर दिया है, ओवरहॉलिंग करने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं हम उस पॉइंट से जिससे हम और आप, हमारा आपका सबका सरोकार है, जो कि है नॉलेज। ज्ञान के हम लोग सहभागीदार हैं, क्रिएटर हैं, डिसेमिनेटर हैं। तो नॉलेज चूंकि इतना जरूरी है आज के समाज में, बिकॉज वी आर लिविंग इन द नॉलेज सोसाइटी, इसलिए बात नॉलेज से करते हैं कि नॉलेज क्या है आज के जमाने में। नॉलेज हैज बिकम द वाइटल इकोनॉमिक रिसोर्स। आपको पता होगा कि कभी भी हमारे ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री में नॉलेज इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं रहा है, लेकिन this time knowledge has become the vital economic resource, especially as the basis of economic growth. But knowledge also is force in other social institutions of modern society. यानी कि नॉलेज इस वक्त एक इकोनॉमिक रिसोर्स के रूप में हमारे सामने है। और क्या है? सर्टिफाइड साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज क्लेम्स have become the source of many of the social, political and personal problems confronting the economy, the state and the communities of modern societies worldwide. Means कि जो कुछ भी आप समझ सकते हैं इस तरह से कि हमारे समाज में जो कुछ भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, उन सबको हम नॉलेज और खास तौर से साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज से दूर कर सकते हैं। इसलिए नॉलेज इतना इंपॉर्टेंट है। डेनियल बेल ने कहा कि the codification of theoretical knowledge is unprecedented, मतलब इतना कभी नॉलेज का विस्तार नहीं हुआ, कभी इतना theoretical knowledge फैला नहीं, and its direct link with innovation, industry and the economy is a new development in the long history of humankind. यानी कि और नॉलेज का ये जो तुरंत जुड़ी हुई है नॉलेज इनोवेशन से, हर जगह बात हो रही है इनोवेशन, कुछ नया कीजिए, लीक से हटके कीजिए, फॉलोवर मत बनिए, ऐसा करिए कि लोग आपके फॉलोवर बने। तो जो इनोवेशन से नॉलेज का लिंकेज है, इंडस्ट्री से है और इकोनॉमी से है, उसने जो ह्यूमन काइंड को, मैन काइंड को डेवलपमेंट दिया है, वैसा कभी भी मनुष्य के सॉरी थोड़ा गला गड़बड़ है, मनुष्य के इतिहास में वैसा कभी नहीं हुआ। फिर तो इस प्रकार के नॉलेज से जनरेट क्या हो रही है? नॉलेज सोसाइटी जनरेट हो रही है। अ न्यू सोसाइटी फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द कंटेम्परेरी सोसाइटल चेंज pushed by technological innovations। यानी कि जितने भी आजकल इतने टेक्नोलॉजी में, आप लोग तो टेक्निकल एजुकेशन के, आप लोगों का टेक्निकल एजुकेशन से सरोकार है, तो टेक्निकल इनोवेशन इतना सारा जो हो गया है, उसी ने पुश किया है हमारे समाज को और एक नई नॉलेज सोसाइटी का इवोल्यूशन हुआ है। और इसमें कौन कंट्रीब्यूट करता है? ह्यूमन बींग्स भी कंट्रीब्यूटर हैं, बट ऑल्सो अबाउट ह्यूमन बींग्स, their personal growth and their individual creativity, experience and participation in the generation of knowledge। तो आप समझ सकते हैं कि हम क्यों एनईपी 2020 इतना हमारे लिए जरूरी है, क्यों हम इतना इनोवेशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज नॉलेज दिस टाइम इज द वाइटल इकोनॉमिक रिसोर्स। फिर बात आती है कि नॉलेज ने बना क्या दिया है? नॉलेज सोसाइटी बना दी है। हम लोग पहले, आपको पता होगा कि बहुत पहले एकदम शुरुआती दौर में हम एग्रीकल्चरल सोसाइटी में रहते थे, फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी के सदस्य हो गए, एंड नाउ वी आर द मेंबर्स ऑफ द नॉलेज सोसाइटी। तो इसी बात को कहा गया है कि इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स द एग्रीकल्चरल सोसाइटी एंड द इंडस्ट्रियल सोसाइटी हैव ग्रेजुअली रिप्लेस्ड by what has been called the knowledge society, and it is driven by new digital technology, globalization and high tech educational systems। अब हर बात ग्लोबल होती है, कोई बात लोकल नहीं है। हम अपने जो इंडिविजुअल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको किसके लिए तैयार कर रहे हैं? हिंदुस्तान के वर्क प्लेस के लिए नहीं तैयार कर रहे हैं, हम उनको तैयार कर रहे हैं ग्लोबल वर्क प्लेस के लिए। या कहीं भी आपका प्लेसमेंट होता है, आप बाहर जाते हैं, इसका मतलब कि हमारी पढ़ाई लिखाई ऐसी होनी चाहिए कि हम विश्व के किसी भी इंस्टीट्यूशन में सर्व कर सके, किसी भी जगह पढ़ा सके, कोलैबोरेशन हो सके, फैकल्टी का एक्सचेंज हो सके, स्टूडेंट्स का। तो ये सब बातें इसीलिए निकल कर आई हैं बिकॉज वी आर लिविंग इन अ नॉलेज सोसाइटी, क्योंकि इसमें ग्लोबलाइजेशन की बात है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन है, टेक एजुकेशनल सिस्टम एकदम नए नए, रोज रोज कुछ कुछ हो रहा है नया। फिर
नॉलेज सोसाइटी इसको यूनेस्को ने 2005 में, देखिए चूंकि ये एकदम रीसेंट, ये आप कह सकते हैं कि नॉमिनक्लेचर है सोसाइटी का, इसलिए सारी बातें बहुत रीसेंट है नॉलेज सोसाइटी के बारे में, इसलिए एज रीसेंट एज इन 2005 यूनेस्को ने कैसे डिफाइन किया है इसको। यूनेस्को कह रहा है, सबको पता होगा यूनेस्को क्या है, नॉलेज सोसाइटीज आर अबाउट कैपेबिलिटीज। वो कह रहे हैं कि जो ज्ञान, जो नया हमारा समाज है वो क्या है, आप समझ सकते हैं कि उसमें योग्यता है किसके पास, जो हम लोग हैं, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनके पास योग्यता है किसकी, आइडेंटिफाई, हम पहचान कर सकते हैं, प्रोड्यूस, हम रोज नित्य नई ज्ञान का प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं नॉलेज की, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एक प्रकार का नॉलेज दूसरे प्रकार के नॉलेज में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, डिसेमिनेट कर रहे हैं। देखिए डिसेमिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी ने डिसेमिनेशन कितना इजी कर दिया है कि व्हाट्सएप तो मतलब बहुत पुरानी चीज हो गई, ईमेल उससे भी पुराना हो गया, लेकिन ये सब कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से डिसेमिनेशन है कि विद इन द सेकेंड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मटेरियल हम डिसेमिनेट कर पाते हैं। एंड यूज इंफॉर्मेशन टू बिल्ड एंड अप्लाई नॉलेज फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। इस तरह से नॉलेज सोसाइटी को डिफाइन किया जा सकता है कि मनुष्य के विकास के लिए हम बना रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं नॉलेज को, और हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी आ गई है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, प्रोड्यूस कर पाते हैं, प्रोसेस, ट्रांसफॉर्म, डिसेमिनेट एंड उसका यूसेज कर पाते हैं। उसी तरह से इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंसेज ने 2008 में डिफाइन किया नॉलेज सोसाइटी को कि द टर्म नॉलेज सोसाइटी रिफर्स टू ए सोसाइटी इन विच, देखिए फिर से वही बात आ गई, क्रिएशन इंपॉर्टेंट है, dissemination important है, and utilization of information and knowledge has become the most important factor of production। यानी कि हम चूंकि डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि नॉलेज क्रिएट हो, डिसेमिनेट हो और यूटिलाइज हो। इन सच ए सोसाइटी नॉलेज एसेट्स, जिसको कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल कहा गया है, इसीलिए देखिए आजकल बात होती है आईपीआर की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये सब नए कंसेप्ट है। नए का मतलब सोसाइटी में, लिटरेचर में पिछले 10, 20, 25 सालों का कंट्रीब्यूशन भी नया माना जाता है। तो आईपीआर की बात पहले नहीं थी क्योंकि नॉलेज को इतना इंपॉर्टेंस पहले कभी नहीं दिया गया। तो नॉलेज एसेट को इंटेलेक्चुअल कैपिटल कहा जाता है आज के जमाने में। आर द मोस्ट पावरफुल प्रोड्यूसर ऑफ वेल्थ मींस हु इज वेल्दी, दैट वन हु हैज मोर नॉलेज। Sidelining the importance of land, the volume of labor and physical or financial capital। आपके पास कितनी जमीन है, आपके पास कितना श्रम, आपके मतलब कितने लेबरर हैं आपके पास, कितना आपके पास फिजिकल फाइनेंशियल कैपिटल है, इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस, अगर आप ज्यादा नॉलेजेबल हैं, आपके पास नया इनोवेशन है, आप स्टार्टअप कर सकते हैं, आपके पास आइडियाज हैं, तो यू कैन एंड यू मस्ट बिकम मोर वेल्दियर देन अदर्स। ये डेफिनेशन इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंसेज ने 2008 में दी। ये बैकग्राउंड मैं आपका इसलिए तैयार कर रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, उसका बेसिस क्या है और एनईपी 2020 हमसे चाहता क्या है। और फिर बात करेंगे कि एनईपी 2020 ने क्या कहा है टेक्निकल एजुकेशन को, कैसे आप उसकी ओवरहॉलिंग कर सकते हैं। तो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इतना पीछे से चल रही हूँ। फिर अब शुरू करते हैं हायर एजुकेशन। मतलब चाहे हम जनरल एजुकेशन के स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल एजुकेशन के हो या टेक्निकल एजुकेशन के हो, तीनों ही जो फॉर्म है वो हायर एजुकेशन के ही फॉर्म है। मतलब हमारे देश में +2 लेवल के बाद हम हायर एजुकेशन में जाते हैं। आप बाहर देखिए तो कहीं कहीं इसको टर्शियरी एजुकेशन भी कहते हैं, मे बी कॉल्ड एज टर्शियरी एजुकेशन, हम लोग हायर एजुकेशन कहते हैं। तो क्या है हायर एजुकेशन? द वाइड स्प्रेड रिकॉग्निशन that higher education is a major driver of economic competitiveness in an increasingly knowledge-driven global economy has made high-quality higher education more important than ever before। चूंकि नॉलेज को इतनी इंपॉर्टेंस मिल गई है, क्योंकि सोसाइटी नॉलेज सोसाइटी हो गई है, इस और जो हमारा हायर एजुकेशन है वो क्या है? नॉलेज ड्रिवन ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब नॉलेज जो है, जो उसका ड्राइवर है, जो उसको चला रहा है हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को। इसीलिए हायर एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट कभी नहीं थी जितनी अब है। क्यों? क्योंकि हायर एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन से हम उस तरीके का वर्कफोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि हमको ग्लोबल सुपर पावर बनाने में मदद करेगा। किस तरह से करेगा अभी बात करते हैं। फिर हायर एजुकेशन और क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हायर एजुकेशन डायरेक्टली किससे लिंक्ड है? रिसर्च और इनोवेशन से। देखिए प्राइमरी एजुकेशन में रिसर्च नहीं होती है, ना सेकेंडरी में होती है, हायर में होती है। या आप कह सकते हैं हायर एजुकेशन इज इक्विवेलेंट टू रिसर्च, क्योंकि आप हायर एजुकेशन का मतलब कि आप किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन अपना हासिल करना चाह रहे हैं। तो जब हम स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेते हैं, मास्टर्स की डिग्री हमको मिल जाती है, तो हम वापस देते हैं सोसाइटी को, इसके फॉर्म में, रिसर्च के फॉर्म में,
ताकि हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको बता सकें इनोवेशन के फॉर्म में। इसलिए हायर एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है। फिर इट लिंक्स विद द लेबर मार्केट। आप प्राइमरी से सेकेंडरी में जाते हैं, सेकेंडरी से हायर में जाते हैं, और हायर से कहाँ जाते हैं? लेबर मार्केट में या वर्क प्लेस पे। इसलिए हायर एजुकेशन चूंकि डायरेक्टली वर्क प्लेस से जुड़ी हुई है, इसलिए भी हायर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके तुरंत बाद हमको एम्प्लॉयमेंट फील्ड में जाना है, हमको एम्प्लॉयबल बनना है। और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, क्योंकि अब बहुत बातें हो रही है, बहुत विदेशों के बच्चे, बाहर के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, हमारे बच्चे पीएचडी करने, नौकरी करने बाहर जाते हैं। तो इंटरनेशनलाइजेशन, अब किसी भी देश की शिक्षा ऐसी नहीं है कि एकदम आप अपनी हिसाब से बनाएंगे, आपको उसको ग्लोबल सेक्टर्स को ध्यान में रखकर बनाना होता है। और आपने अगर एनईपी 2020 का डॉक्यूमेंट पढ़ा हो तो उसमें भी इंटरनेशनलाइजेशन की बात की गई है। इंटरनेशनलाइजेशन की बात काफी पहले से चल रही है। और देयर आर 3 टाइप। तो इससे समझ में आ गया कि हायर एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। व्हाई? बिकॉज इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद रिसर्च, इट डायरेक्टली लिंक्ड विद वर्कप्लेस, एंड इंटरनेशनलाइजेशन इसका हो चुका है। और 3 तरीके की हायर एजुकेशन है हमारे यहाँ। There are 3 types of education at higher education level: general, professional and technical. कई बार हम लोग जब स्टूडेंट लेवल पे होते हैं तो हमको ये कोई गाइड नहीं करता है, हमको इस तरह की काउंसलिंग नहीं मिलती है, और हम एक धर्रे पर चलते हैं। मतलब हम इस टर्मिनोलॉजी नहीं जानते। हमको लगता है कि 12th करने के बाद या तो हम BA BSc BCom कर सकते हैं, या हम ये आपका इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह भी जा सकते हैं, या हम कुछ वोकेशनल कोर्सेज, कुछ पॉलिटेक्निक्स वगैरह कर सकते हैं। मतलब जो बेसिक डिफरेंस है इनके बीच का, क्या सबके आउटकम्स हैं, लर्निंग आउटकम्स, इन सब के बारे में हमको 12th में ये गाइडलाइन मिलनी चाहिए। और बहुत सालों से कहा जा रहा है कि सेकेंडरी एजुकेशन में इस तरह की काउंसलिंग सर्विसेज दी जाएं, बट स्टिल आवर सेकेंडरी एजुकेशन फॉर वर्क प्लेस हैज missed such type of opportunities, and these students after secondary education are मतलब वो एकदम misplaced हैं, misinformed हैं, mal information है उनके पास, उनको ज़्यादा पता नहीं है। तो हम जानते हैं क्या बेसिक डिफरेंस है के बीच में। जनरल प्रोफेशनल को सिर्फ आप सरफेस लेवल पे जान लीजिए, मेन बात टेक्निकल एजुकेशन की करेंगे। तो जनरल एजुकेशन क्या है? जनरल एजुकेशन इज अंडरस्टूड as education that focuses on the development of the student as individuals। मतलब कि जनरल एजुकेशन इस तरीके की शिक्षा आप समझ सकते हैं कि हमको एक अच्छा इंडिविजुअल बनाना है, and puts them in touch with broad yet focused courses that promote critical thinking and increase their awareness of the world around them। सिर्फ ये काम है जनरल एजुकेशन का कि हम एक अच्छे इंडिविजुअल का निर्माण कर सकें जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग हो, वो लॉजिकली सोच सके, और जो उसके आसपास का संसार है उसके बारे में अवेयर हो। मतलब उसको बिल्कुल जैसे मतलब एक पढ़ा लिखा आदमी है तो उसको पता होना चाहिए क्या चल रहा है उसके बगल में, इर्द गिर्द। 4 सब्जेक्ट्स क्या पढ़ाए जाते हैं जनरल एजुकेशन में, जैसे इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंसेज, जो हमारे बल्क ऑफ जनरल एजुकेशन कोर्सेज का हिस्सा होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि BA BSc BCom जो करने गया है वो जनरल एजुकेशन ले रहा है। फिर कुछ बच्चे बीएड करने जाते हैं, कुछ BA LLB में एडमिशन लेते हैं, आजकल इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहा है, वो प्रोफेशनल एजुकेशन है। तो कैसे जनरल एजुकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन से अलग है? प्रोफेशनल एजुकेशन ऑन द अदर हैंड इज ए फॉर्मलाइज्ड अप्रोच। मतलब हम फॉर्मल तरीका हमने चुना है, कैजुअल नहीं है, थ्रू विच स्टूडेंट्स एक्वायर, जिसमें कि हम विद्यार्थी को क्या देते हैं, स्टूडेंट को क्या देंगे, कंटेंट, उसको पढ़ाएंगे, टेक्स्ट पढ़ाएंगे, नॉलेज देंगे, एंड ऑल्सो टेक्निक भी सिखाएंगे। कौन सी टेक्निक? टू अप्लाई दैट नॉलेज इन ए प्रोफेशन। मीन्स अगर वो BEd की पढ़ाई करने गया है तो टीचिंग प्रोफेशन के लिए उसको इंटर्नशिप दी जाएगी। अगर वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए गया है तो मेडिकल प्रोफेशन के लिए, सच एज एंड सो ऑन, जैसे लॉयर बनने गया है, BA LLB करने गया है तो लॉ। तो ये बेसिक डिफरेंस जनरल और प्रोफेशनल एजुकेशन के बीच में है कि यहाँ पे आपको प्रोफेशन में यूज होने वाला नॉलेज, स्किल और टेक्निक दी जाती है। तो स्टूडेंट्स इन प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्सेज आर एक्सपेक्टेड, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो ये कोर्स करने के बाद उनके अंदर क्या आ जाएगा, टू अटेन अ लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, उनके अंदर वो कॉम्पिटेंट हो जाएंगे उस प्रोफेशन में काम करने के लिए, नेसेसरी फॉर एंट्री इनटू प्रोफेशनल प्रैक्टिस। दे आर बाउंड बाय ए कोड ऑफ एथिक्स। देखिए सबका कोड होता है, ड्रेस कोड होता है, इवन कोड ऑफ कंडक्ट होता है, लॉयर्स कैसे क्या पहनेंगे, डॉक्टर्स क्या पहनेंगे। आज तक थोड़ा सा ये डाउटफुल है, डिबेटेबल है कि टीचिंग प्रोफेशन है कि नहीं। कई लोग टीचिंग को प्रोफेशन नहीं मानते हैं बिकॉज इस तरीके का ड्रेस कोड इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं मिस करता है। ये डिबेट का मुद्दा है। एंड दे आल्सो हैव द रिस्पांसिबिलिटी एंड द कमिटमेंट टू कंटिन्यू अपडेटिंग देयर नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस इन द प्रोफेशनल लाइफ।
ये बेसिक अंतर जनरल और प्रोफेशनल एजुकेशन का है। अब हम आते हैं उससे जिससे आपका लेना देना है, टेक्निकल एजुकेशन। क्या है टेक्निकल एजुकेशन और किस तरह से तैयार करती है स्टूडेंट को? इट प्रिपेयर्स इंडिविजुअल्स फॉर द वर्ल्ड ऑफ वर्क। मीन्स जो टेक्निकल एजुकेशन है जो आप लेने आए हैं उसमें आपको हम वर्क प्लेस के लिए तैयार कर रहे हैं। हम मतलब आपका सिलेबस, आपका करिकुलम, आपके टीचर्स, आपके पॉलिसी मेकर्स, एंड इन्वॉल्व्स, और इसमें आपको सिखाया क्या जाएगा? एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ वर्क रिलेटेड स्किल्स। मीन्स जिस भी काम के लिए आपने एडमिशन लिया है, जिस भी कोर्स में, उससे रिलेटेड जो स्किल है उसका एक्विजिशन, मतलब वो आपको पहले आपको आ जाए, फिर उसमें आप डेवलपमेंट हासिल कर लें, फिर आप उसको अप्लाई कर सके, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दैट अंडरलाइज दोज स्किल्स। और वो जो कौशल आप सीखने जा रहे हैं, जो स्किल आप सीखने जा रहे हैं, उसका आपको नॉलेज भी हो, आपको ये भी पता हो कि कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल उसके अंडर लाई है, मतलब उसपे किस पे वो बेस्ड है। फिर टेक्निकल एजुकेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट, मतलब हमारे यहाँ भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में कौन कौन सी आप एजुकेशन को टेक्निकल एजुकेशन कहेंगे? जैसे आर्किटेक्चर हो गया, प्लानिंग हो गया, डिजाइन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि सबसे ज्यादा मोर और लेस लोग सभी लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी टेक्निकल एजुकेशन है। बट उसके अलावा भी है, आर्किटेक्चर है, प्लानिंग है, डिजाइन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, एंड के और किस किस लेवल पे मिलते हैं ये कोर्सेज हमको? डिप्लोमा आप कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये टेक्निकल एजुकेशन का मतलब है। मतलब कि अब आपको पता होना चाहिए कि आप जनरल, प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन में से कौन सी एजुकेशन आप ले रहे हैं, और बाकी तरह की एजुकेशन जो हायर एजुकेशन लेवल पे होती है उससे ये किस तरह से अलग है। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको होनी चाहिए। देन टेक्निकल एजुकेशन जो है वो डेवलपमेंट से सीधी सीधी जुड़ी हुई है, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट से है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। इस तरह से कि टेक्निकल एजुकेशन हैज बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखिए, अगर आप, चूंकि अभी आप +2 स्टूडेंट्स हैं, आपको नहीं आइडिया होगा कि पहले जो आप ये जो NEP 2020 है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम दिया गया है शिक्षा मंत्रालय को। उसके पहले इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, और उसके पहले भी इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था। तो जो बीच में ये जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट शिक्षा का नाम दे दिया गया था, मानव संसाधन मंत्रालय, ये इस सोच के तहत दिया गया था कि जो मानव को संसाधन मानिए, मतलब ह्यूमन को रिसोर्स है, तो उसमें आप जितना ज्यादा आप उसमें इनपुट देंगे उतना ज्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। तो ह्यूमन एज अ रिसोर्स है, मतलब ये बड़ी बात है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है टेक्निकल एजुकेशन, दैट नीड्स टू बी एम्ब्रेस्ड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी आप कह सकते हैं कि जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित होगी, डेवलप होगी, उतना जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। डायरेक्ट कनेक्शन है, यू ऑल नो। And sustainable technological development of any nation means it is directly proportional. Technical education is directly proportional to the rapid industrialization and the sustainable technological development of any nation. इसलिए इतनी जरूरी है टेक्निकल एजुकेशन, इसलिए हम इस पर इतनी बात कर रहे हैं। फिर टेक्निकल एजुकेशन हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इन मैनी सोसाइटीज। यानी कि आप भारत में नहीं, किसी भी समाज में जाकर देख लीजिए तो टेक्निकल एजुकेशन जो है वो इंटीग्रल पार्ट है। क्यों? क्योंकि सारी टेक्निक्स, इनोवेशन वहीं से निकलना है, बिकॉज ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी से जुड़ी है। जितना बढ़िया टेक्निकल एजुकेशन होगा, जितना बढ़िया स्टूडेंट हम बनाएंगे, उतना ही देश की प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमको हेल्प मिलेगी। फिर टेक्निकल एजुकेशन इज ए प्लान्ड प्रोग्राम ऑफ कोर्सेज एंड लर्निंग। मीन्स ऐसा नहीं है, पॉलिसी मेकर्स बहुत मेहनत करते हैं तब जाके आपका करिकुलम डिजाइन होता है, क्या आपको पढ़ाया जाए, क्या बढ़िया से बढ़िया पढ़ाया जाए ताकि आप ग्लोबल मार्केट प्लेस में कम्पीट कर पाए, आपके पास 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स हो। देखिए, एक नई बात है 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल। पहले मतलब आप सिर्फ लिटरेट हैं, ये 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट कम्पीट इन द वर्क प्लेस इफ यू आर नॉट डिजिटली लिटरेट। तो ये सारी चीजें दूसरी तरफ हम चले जाएंगे। तो टेक्निकल एजुकेशन इज ए प्लान्ड प्रोग्राम ऑफ कोर्सेज एंड लर्निंग दैट बिगिंस विद एक्सप्लोरेशन ऑफ कैरियर ऑप्शंस, सपोर्ट्स बेसिक एकेडमिक एंड लाइफ स्किल्स। देखिए, लाइफ स्किल्स भी एक नया शब्द है, आई डोंट नो यू आर अवेयर विद इट और नॉट। लाइफ स्किल्स का मतलब होता है वो सारी स्किल्स जिससे हम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकें, हैप्पीली उसको जी सकें, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो। ये भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। एंड इनेबल्स अचीवमेंट ऑफ हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, लीडरशिप,
प्रिपरेशन फॉर इंडस्ट्री डिफाइंड वर्क एंड एडवांस इन कंटिन्यूइंग एजुकेशन। तो इसमें कोई विशेष समझाने वाला नहीं है, आप इसको समझ लीजिए बिकॉज अभी हम एनईपी पे आ नहीं पाए। तो ये टेक्निकल एजुकेशन और डेवलपमेंट के बीच का रिलेशनशिप है। देन एक और टर्म जो टेक्निकल एजुकेशन से मिलता जुलता है और कई बार इंटरचेंजेबली यूज कर दिया जाता है, बट वोकेशनल एजुकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि ये आपकी तकनीकी शिक्षा है और ये व्यावसायिक शिक्षा आप कह सकते हैं, वोकेशनल एजुकेशन। तो जान लेते हैं, थोड़ा सा माइनर अंतर है दोनों में। द टर्म टेक्निकल एजुकेशन इज आल्सो अकम्पनीड विद द टर्म वोकेशनल एजुकेशन। कभी कभी साथ में यूज किया जाता है एंड दे से बात की थी। तो the term technical education is also accompanied with the term vocational education and they two are used interchangeably sometimes। वो कह रहे हैं कि कभी-कभी एक दूसरे की जगह यूज कर लिया जाता है। Institutions offering technical education like the IITs teach the theory and science behind the occupation, while vocational institutions like ITIs adopt a more hands-on approach to impart the skills needed to do the job successfully। मतलब कि जो टेक्निकल एजुकेशन जैसे IITs हैं जो टेक्निकल एजुकेशन ऑफर करते हैं, उसमें ऑक्यूपेशन के पीछे की थ्योरी और साइंस आपको पढ़ाते हैं, जबकि जो वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसे ITIs हैं वो हैंड्स ऑन अप्रोच पे ज्यादा बल देते हैं, ज्यादा फोकस उनका स्किल ओरिएंटेड पे है। ठीक है, उसी तरह से आप जान सकते हैं कि यूनेस्को ने कैसे टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को डिफाइन किया है। यूनेस्को डिफाइंस टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एज all forms and levels of the education process involving, in addition to the general knowledge, the study of technologies and related sciences and the acquisition of practical skills, know-how, attitudes and understanding relating to the occupations in the various sectors of economic and social life। तो ये एक तरीके से टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन कहीं कहीं साथ में यूज की जाती है, कभी एक दूसरे की जगह यूज की जाती है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस दोनों में है। अब आते हैं हम NEP 2020 जिसकी बात करने के लिए हम यहाँ पर हैं। यानी कि NEP 2020 सबसे पहले इसका विजन क्या है, क्या इसने देखा है, मतलब कि विजन का मतलब कि हमने दूरदृष्टि से देखा है कि ये कुछ है जो हमको अचीव करना है। फिर होता है मिशन कि किसके थ्रू हम उसको अचीव करेंगे। तो विजन इनका क्या है, ये मान के चले हैं ऐसा कि हमको बनाना है एक एजुकेशन सिस्टम। कैसा एजुकेशन सिस्टम? एन एजुकेशन सिस्टम रूटेड इन इंडियन इथॉस, यानी कि हमारी जड़ें तो हमारे जो भारतीयता है उससे जुड़ी रहें, मतलब हम अपनी भारतीयता को, भारतीय मूल्यों को ना छोड़ें। कंट्रीब्यूट सोसाइटी टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, दैट इज भारत, सस्टेनेबली इनटू एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी। देखिए हर शब्द है वो एक एक शब्द को आप आधा आधा घंटा एक्सप्लेन कर सकते हैं। इक्विटेबल, एक चीज होती है इक्वालिटी और एक होती है इक्विटी, थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में, कई लोग साथ साथ समझ लेते हैं इक्वालिटी और इक्विटी को। देखिए इक्वालिटी का मतलब होता है समानता और इक्विटी का मतलब होता है समता। तो इक्वालिटी का क्या मतलब है कि हमने सबको इक्वल बांट दिया है, तो हमको ऐसा लगता है कि हमने बहुत फेयर ट्रीटमेंट किया है, बट इक्वालिटी एक्चुअली अनफेयर ट्रीटमेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति, मान लीजिए आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं और हमने सबको एकदम समान तरीके से हम सबको देख रहे हैं और ऐसे ही कहा भी जाता है कि सबको समान तरह से देखिए, बट जो स्टूडेंट है वो एक्चुअली उसके पास जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। कोई मतलब आप कह सकते हैं बिलो एवरेज है, कोई गिफ्टेड है, कोई इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है, कोई सोशली डिप्राइव्ड है, कोई इकोनॉमिकली एकदम हायर क्लास का है। तो वो जो पहले से ही उनके पास इनइक्वालिटी है और अगर उसके बावजूद हम उनको इक्वल ट्रीटमेंट देंगे तो एक्चुअली हम अनइक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं सबको। तो क्या करें? इक्विटी का टर्म आया। इक्विटी कह रहे हैं कि जिसको जैसी जरूरत है वैसा ट्रीटमेंट दीजिए। मीन्स अगर कोई बिलो एवरेज है तो आप उसको ग्रेटर एम्फेसिस दीजिए, आप उसको रिमीडियल ट्रीटमेंट दीजिए, आप उसको ट्यूटोरियल्स दीजिए, इस तरह से। मतलब इसलिए आजकल इक्वालिटी की बात नहीं होती है, अब इक्विटी की बात होती है। तो ये कह रहे हैं कि इक्विटेबल हमको सोसाइटी बनानी है, यानी कि जिसको जितनी जरूरत है उस हिसाब से उसको आप ट्रीटमेंट दीजिए। इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल, मतलब हमको सबको उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है। एंड देयर बाय मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, यानी कि इंडिया को हमको क्या बना देना है? नॉलेज सुपर पावर तो बनाना है, बस ऐसा कि पूरे विश्व में हमारा नाम हो। तो मतलब बहुत बड़ा विजन है इस पॉलिसी का। फिर
The National Education Policy 2020 proposes the revision and revamping of all aspects of education. ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन की बात इसने की है. अगर आपने कहीं ये पॉलिसी पढ़ी हो तो स्कूल एजुकेशन से शुरुआत है और हर फील्ड को, हर एस्पेक्ट को इन्होंने पूरी तरह से बदलने की बात की है कि ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए. इसीलिए हम अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं. स्कूल लेवल पे तो फिर भी थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन हो गया है. तो स्कूल लेवल पे जो बेसिक अंतर है आपको पता होना चाहिए. क्या है वो? जो 10+2 स्ट्रक्चर चलता था उसको इन्होंने कह दिया है 5+3+3+4. यानी कि जो 11th-12th होता था, जो 10th से बिल्कुल अलग होता था और हमको लगता था 10th तक हमको कितना कम कोर्स रहता है, 11th-12th में अचानक से इतना कोर्स, सिलेबस, प्रेशर, बोर्ड, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आ जाता है. उसको इन्होंने कर दिया है बराबर बांट दिया, 9th, 10th, 11th, 12th. तो ये 4 एक जो है वो कंपोजिट स्ट्रक्चर हो गया है. तो थोड़ा सा बच्चे के लिए इजी हो गया है. स्टूडेंट सेंटर्ड है ना, बिकॉज एवरीथिंग इज स्टूडेंट सेंटर्ड नाउअडेज. तो इन्होंने हर एस्पेक्ट को के रिवैम्पिंग की बात की है. रेगुलेशंस एंड गवर्नेंस टू क्रिएट अ न्यू सिस्टम व्हिच इज अलाइन्ड विद द एस्पिरेशनल गोल्स ऑफ 21st सेंचुरी स्टूडेंट्स. देखिए आज के जो बच्चे हैं, जो आप लोग हैं, जो स्टूडेंट है आज का, उसका जो एस्पिरेशनल गोल है वो उससे बिल्कुल अलग है जो हमारा था. हम जब हायर एजुकेशन में एंटर किए थे तो हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव, बहुत कुछ करियर एस्पिरेशन नहीं, बस ऐसे ही. लेकिन आज का जो स्टूडेंट है वो फोकस्ड है, उसके पास गोल है, तो उसको क्या बनना है, कौन सी प्लेसमेंट में उसको प्लेसमेंट चाहिए, सारी चीजें. एज वेल एज विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. अगर आज की बात हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात ना हो तो बेकार है. सबको पता है एसडीजी, हर जगह एसडीजी की बात हो रही है. तो आप कह सकते हैं कि जो NEP 2020 है वो अलाइनमेंट है उसका किसके संग, मतलब वो साथ साथ चल रही है. किसके साथ चल रही है? जो आप हैं, जो यूथ है, जो 21st सेंचुरी स्टूडेंट्स है, उसका जो गोल है और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, दोनों को साथ में लेकर चलने की बात NEP 2020 कर रही है. फिर एजुकेशनल पिलर्स हैं कुछ NEP 2020 के, मतलब सारा कुछ इसी के इर्द गिर्द है. क्या? एक्सेस मीन्स हम सब तक पहुंचा सके शिक्षा. इक्विटी, वही जो इक्विटी की बात हो गई, यानी कि सबको सबकी जरूरत के हिसाब से दीजिए. क्वालिटी दीजिए. देखिए हाँ, जब भी आप हायर एजुकेशन पे लिटरेचर उठा के पढ़ेंगे या टेक्निकल एजुकेशन पे, तो आप क्या पाएंगे कि क्वांटिटेटिवली तो हमने बहुत तरक्की कर ली है. आप पाएंगे डेटा, पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे पास सिर्फ इतने कॉलेज, इतनी यूनिवर्सिटी एंड इतने इंस्टीट्यूशंस थे, और अब ट्रिमेंडसली हमने उसमें रिमार्केबल ग्रोथ हासिल कर ली है. बट क्वालिटी डिप्राइव्ड है, क्वालिटी अच्छी नहीं है. इसीलिए जब आप देखते हैं कि जब वो हायर एजुकेशन की रैंकिंग आती है, यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग आती है, तो हम पहले 100-200 में कहीं नहीं होते. और अफोर्डेबिलिटी, यानी कि सब अफोर्ड कर पाए. एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो पॉलिसी मेकर्स है, जो टीचर है, जो स्टूडेंट है, सबकी अकाउंटेबिलिटी हो, हमको जिम्मेदारी हो सब पे. तो ये दूसरी बताने वाली बात. देन NEP 2020 की चेंजेस. देखिए यहाँ से आपके एकदम ये चीज है जो आपको चाहिए था कि क्या की चेंजेस NEP 2020 ने प्रिस्क्राइब किए हैं कि ऐसा हो या ऐसा होना चाहिए. क्या है? सबसे पहली बात, ये जो बार बार कह रही है पॉलिसी कि आप बन जाइए क्या, मल्टी डिसिप्लिनरी. वो कह रहे हैं कि उन इंस्टीट्यूशंस का कोई बहुत भविष्य नहीं है अगर वो एक ही प्रकार का डिसिप्लिन में चल रहे हैं, जैसे सिर्फ साइंस कॉलेज है या आर्ट्स कॉलेज है या ओनली टेक्निकल कॉलेज है. ऐसे मत रहिए, आप मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाइए. क्यों? क्योंकि ये बात कहीं आगे आएगा, मैंने लिखा है उसको, कि इस पॉलिसी ने बाउंड्रीज रिजॉल्व कर दी है कि अब आर्ट्स और साइंस ऐसा नहीं है कि आर्ट एकदम अलग कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट है और साइंस कुछ अलग है, कॉमर्स कुछ अलग है, को करिकुलर कुछ अलग है, करिकुलर कुछ अलग नहीं. वो कह रहे हैं सब कुछ आपस में मिला हुआ है, आखिर सब कुछ नॉलेज ही तो है. तो वो कह रहे हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाइए आप, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस विद मोर HEIs. वो कह रहे हैं मूविंग टुवर्ड्स, मतलब आप बढ़ जाइए उस तरफ. एंड आप इंस्ट्रक्शन किस भाषा में दीजिए? लोकल और इंडियन लैंग्वेजेस. देखिए अगर आप लोग चूंकि एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, जो हायर, जैसे ही भारत आजाद हुआ, जो पहली पॉलिसी हमारे यहाँ बनी थी वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन थी, राधाकृष्णन कमीशन 1948 में बनी थी. तो उस कमीशन ने उस वक्त, अब आपको समझना पड़ेगा कि वो कंटेक्स्ट अलग था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो आप हायर एजुकेशन है वो इंग्लिश में दीजिए, कि द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हायर एजुकेशनल कोर्सेज मस्ट बी इंग्लिश. बिकॉज क्योंकि वो बहुत, हमारे पास उतना लिटरेचर नहीं था हिंदी में या लोकल लैंग्वेजेस में, और हम उतना, हमारे पास पैसा नहीं था, रिसोर्स नहीं था कि हम उतना क्रिएट कर पाए. लेकिन आप वी आर केपेबल एनफ. तो वो कह रहे हैं कि आप लोकल और इंडियन लैंग्वेजेस को मतलब एम्फेसाइज कीजिए. मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हो रही है. फिर क्या कह रहे हैं? वही मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन. फिर कह रहे हैं मूविंग टुवर्ड्स फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी. देखिए ऑटोनॉमी की बहुत बात होती है आजकल, कहा जाता है कि आप अपने इंस्टीट्यूशन को ऑटोनोमस बना लें या फैकल्टी ऑटोनॉमी. देखिए जब तक ऑटोनॉमी नहीं होगी तब तक इनोवेशन की बात नहीं की जा सकती.
व्हाई? बिकॉज हम अगर हमारा कहीं से एफिलिएशन है, हम किसी की कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है, तो हम अपने हिसाब से सिलेबस नहीं बना सकते हैं, अपने हिसाब से एग्जामिनेशन की डेट नहीं सेट कर सकते, क्वेश्चन पेपर सेटर, एवरीथिंग, हर चीज के लिए हम यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंट हैं। अगर हम ऑटोनोमस होंगे तो हम कुछ नया ला सकते हैं, कुछ उसमें इनोवेशन कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो कुछ करने के लिए आपको ऑटोनॉमी चाहिए। तो एनईपी कह रहा है कि आप ऑटोनोमस हो जाएं। फिर क्या कह रहा है? रीवैम्पिंग करिकुलम, पेडागोजी, असेसमेंट एंड स्टूडेंट सपोर्ट। रीवैम्पिंग, पूरा बदल दीजिए किसको? करिकुलम को। पेडागोजी, पेडागोजी का मतलब होता है टीचिंग एंड लर्निंग, मतलब कि आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, शिक्षण शास्त्र हिंदी में कहते हैं। आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग बदल दीजिए। असेसमेंट का तरीका बदल दीजिए। आपको पता होगा कि असेसमेंट का तरीका बहुत बदल गया है। अब है सीसीई चलता है हमारे यहाँ। क्या है सीसीई? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब जो आपका इंटरनल असेसमेंट है, जो बार बार फॉर्मेटिव असेसमेंट है, चलता रहता है साल भर, एंड स्टूडेंट सपोर्ट। और क्या कह रहे हैं? रीअफर्मिंग द इंटीग्रिटी ऑफ फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप पोजीशंस, यानी डिसेंट्रलाइज कर दीजिए सब कुछ। ऐसा नहीं हो कि एक ही व्यक्ति के साइन से कोई भी कागज कहीं से कहीं पास हो सकता है। फैकल्टी इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप पोजीशंस में इंटीग्रिटी को रीअफर्म करिए। और ये बहुत खास बात है कि एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की गई है कि एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि हायर एजुकेशन लैक किस में कर रहा है? रिसर्च में। और अक्सर रिसर्च अच्छी नहीं हो पाती है, लैक ऑफ फंडिंग, लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो कह रहे हैं कि हम बना दे रहे हैं एनआरएफ, बना दे रहे हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और हर डिसिप्लिन की रिसर्च इससे ग्रांट हो सकती है। मतलब शर्त बस ये है कि रिसर्च बढ़िया होनी चाहिए आपकी। Then, governance of HEIs by independent boards having academic and administrative autonomy, light but tight regulation by a single regulator for higher education। ये मैंने बाद में डिस्कस किया आपसे। देखिए इस वक्त कितने सारे चलते हैं। यूजीसी है, आपका AICTE है जिससे टेक्निकल एजुकेशन गवर्न है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यूजीसी हो गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उनके लिए क्या चलता है? NCT, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इतने सारे रेगुलेटर्स हमारे यहाँ चलते हैं। तो कह रहे हैं सबको हटा दीजिए, सिर्फ एक रखिए, उसका नाम है HECI, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। आगे डिस्कस किया है मैंने। तो कह रहे हैं लाइट करिए, थोड़ा रेगुलेशन लाइट कीजिए, लेकिन टाइट हो, मतलब कि आप पे कसाब हो लेकिन बहुत सारे ना हो। और इंक्रीज्ड एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन, हमको बढ़ाना पड़ेगा पहुंच सबको सबकी जरूरत के हिसाब से, और सबको इंक्लूड करना। देखिए इंक्लूजन एक ऐसा पॉइंट है जिसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए। जो राइट टू एजुकेशन आ गया है हमारे देश में, कब आया? ये एक्ट आया था 2009 में और इम्प्लीमेंट 2010 से हुआ है। तो उसके बाद कह दिया गया है कि जो शिक्षा है कानूनी अधिकार है। एजुकेशन इज द बर्थ, एक्सक्लूड नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, क्रीड, कलर, डिसेबिलिटी। तो हमको सबको इंक्लूड करके चलना है। देन ये कुछ एकदम अलग बातें हैं जो एनईपी 2020 से पहले किसी भी पॉलिसी ने नहीं कही। की चेंजेस एकदम बदल दिया है उन्होंने। इन्हीं यही चीजें हैं जो हम वो नहीं कर पा रहे हैं, यू कैन से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि जो सबसे खास है कि जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है या तो 3 या 4 साल की होगी, उसमें क्या होगा? मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस विद इन दिस पीरियड। ये मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट आगे भी किसी स्लाइड में है। तो मल्टीपल एग्जिट मतलब आप उसमें से बार बार निकल सकते हैं। बार बार निकल सकते हैं का मतलब कि जैसे आपका 4 साल का कोर्स है तो 1 साल के बाद भी निकल सकते हैं, 2 साल के बाद भी, 3 साल के बाद भी, 4 साल के बाद भी। इसलिए नहीं कि निकलना है, इसलिए कि अगर कोई जरूरत आ गई, कोई दिक्कत है, आप नहीं कर पा रहे कोर्स पूरा, या आप कोई और दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, अगर हमारा 4 साल का कोर्स है और हमने 1 साल में ही छोड़ दिया तो हमारा 1 साल बर्बाद, उसकी पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अब इन्होंने हर साल को अर्थ दिया। ये कह रहे हैं कि आपको एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशंस दिया जाएगा विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस विद इन दिस पीरियड विद एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। वो कह रहे हैं कि अगर आपने 1 साल का कोर्स पढ़ लिया है तो आपको हम सर्टिफिकेट देंगे। A certificate after completing 1 year in a discipline or field including vocational and professional areas। डिप्लोमा देंगे अगर आपने 2 साल की पढ़ाई कर ली है सफलतापूर्वक, एंड बैचलर्स डिग्री तो अगर आपने 3 साल का कर लिया। फिर वो कह रहे हैं कि 4 ईयर मल्टीडिसिप्लिनरी, ये देखिए बैचलर प्रोग्राम की बात है, दी 4 ईयर मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम हाउएवर शैल बी द प्रिफर्ड ऑप्शन। वो कह रहे हैं कि अगर आप 4 साल का कर लीजिए, उसमें 4 साल क्यों है? क्योंकि 1 साल उन्होंने रिसर्च को दिया है, तो बढ़िया आपका एकदम प्रिफर्ड ऑप्शन है, इसको लेकर चलिए। एक साथ 4 साल की पढ़ाई पूरी कर लीजिए तो आपको हम बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च का सर्टिफिकेट डिग्री देंगे। फिर एक जो नई बात बिल्कुल इन्होंने की है जो कभी नहीं की गई हिंदुस्तान में, वो क्या है? ABC। क्या फॉर्म है ABC का? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। वो कह रहे हैं कि बैंक क्या होता है? बैंक में लोग पैसे जमा करते हैं ना जनरली, तो ये कह रहे हैं क्रेडिट स्टोर कीजिए। क्रेडिट क्या है? आप सब जानते होंगे, आपके सिलेबस में आपको लिखा होगा कि ये जो आपका मॉड्यूल है वो इतने क्रेडिट का है, इतने क्रेडिट का है। क्रेडिट का मतलब होता है 2 अर्थ में आप जान सकते हैं। एक तो आप इसको अर्न करेंगे,
और दूसरा कि अगर 5 क्रेडिट का कोर्स है, इसका मतलब सप्ताह में, वीक में वो 1-1 घंटे, 5 घंटे आपको पढ़ना जरूरी है, अगर वो थियरी है तो। और अगर प्रैक्टिकल है तो वो उसका डबल करिए, 10 घंटे पढ़ेंगे तब 5 क्रेडिट होगा। तो ये क्रेडिट की कहानी है। तो कह रहे हैं कि एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बना लीजिए। क्या होगा उससे? शैल बी एस्टैब्लिश्ड व्हिच वुड डिजिटली स्टोर द एकेडमिक क्रेडिट्स अर्न्ड। हम जितना भी क्रेडिट अर्न करेंगे उसको वो डिजिटली स्टोर करके रखेगा। अर्न फ्रॉम वेरियस रिकॉग्नाइज्ड HEIs, हमने बहुत सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई की है और हमने बहुत सारे क्रेडिट अर्न किए, वो हमारा डिजिटली स्टोर है। सो दैट द डिग्रीज फ्रॉम एन HEI कैन बी अवॉर्डेड टेकिंग इनटू अकाउंट्स क्रेडिट्स अर्न। मतलब कि ताकि लास्ट में हमको डिग्री दी जा सके हमने जितने क्रेडिट अर्न किए। अगर हम डिग्री लेवल का क्रेडिट अर्न कर लेते हैं जितना क्रेडिट जरूरी है तो हमको डिग्री मिल जाएगी। तो मतलब आपकी कोई पढ़ाई वेस्ट नहीं होगी, ये इसके पीछे का थीम है। फिर वो क्या कह रहे हैं कि मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटीज बना लीजिए। किसके लिए? होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एट पार विद IITs, IIM। सबको पता है IIT IIM क्या है। और वो कह रहे हैं उसको कहा क्या जाएगा, मेरू नाम दिया है। मेरू फुल फॉर्म क्या है इसका? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज विल बी सेट अप एंड विल एम टू अटेन द हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इन क्वालिटी एजुकेशन। नो रिजिड्स, और ये बात अब आ गई निकल कि नो रिजिड सेपरेशन, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट सेपरेशन हमने नहीं किया है आर्ट और साइंस में, करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर में, वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम में। तो ये कुछ एकदम की चेंजेस हैं NEP 2020 के, तो आज से पहले कभी किसी पॉलिसी ने हमको नहीं बताए थे। अब आते हैं NEP 2020 एक्सक्लूसिवली टेक्निकल एजुकेशन पे क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि टेक्निकल एजुकेशन का स्कोप बढ़ा दीजिए। आप डिग्री प्रोग्राम भी दीजिए, डिप्लोमा प्रोग्राम भी दीजिए, सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी दीजिए, ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ TE। हमको TE का, टेक्निकल एजुकेशन का स्कोप बढ़ाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें इन्वॉल्व हों, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम टेक्निकल एजुकेशन दे पाए। फिर क्या करें? चूंकि इसके बाद बच्चे को, स्टूडेंट को सीधे कहाँ जाना है? इंडस्ट्री में। तो वो कह रहे हैं ब्रिंगिंग क्लोजर कोलैबोरेशंस। हमको क्लोजर कोलैबोरेशन करना होगा इंडस्ट्री और HEI के बीच में। इस कोलैबोरेशन में क्या होगा? इंडस्ट्री हमको बताएगी कि हमको क्या चाहिए, जो हमारा मतलब हम किस तरीके का वर्कफोर्स चाहते हैं अपने पास, तो वही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इनकलकेट करना पड़ेगा अपने स्टूडेंट्स में, ताकि जैसे ही बच्चा वर्क प्लेस में जाए, स्टूडेंट जाए, तो तुरंत उसको इंडस्ट्री एब्जॉर्ब करे। एंड HEI is to drive innovation and research। और इसमें इनोवेशन, इनोवेटिव टेक्निक्स लगेगा, इनोवेटिव मेथोडोलॉजी होगी, कुछ इनोवेशन किया जाएगा और रिसर्चेस के बाद ये सब हो पाएगा। फिर क्या करें हम? यूजिंग द टेक्नोलॉजी टू ओवरकम द सेपरेशन बिटवीन टेक्निकल एजुकेशन एंड अदर डिसिप्लिन्स। जो एकदम टेक्निकल एजुकेशन को उन्होंने बना दिया है कुछ इस तरह से, हम लोगों ने बना रखा है कि बिल्कुल वो सबसे अलग है, उनका जनरल एजुकेशन या अदर डिसिप्लिन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बंद करना है, इसको खत्म करना है। क्यों? क्योंकि सबके बीच की वो बाउंड्री खत्म करना चाहते हैं। तो कह रहे हैं और टेक्नोलॉजी यूज कीजिए और ये जो सेपरेशन है उसको ओवरकम कर दीजिए। और क्या करिए? प्लानिंग टू ऑफर टेक्निकल एजुकेशन इन मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स। देखिए आपको पता होगा बहुत सारी IITs अब ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस के कोर्सेज चला रही हैं। आपका ये IIT खड़गपुर है, उसमें BEd कोर्स शुरू हो गया है। ये सब इसीलिए मल्टी डिसिप्लिनरी, वहाँ टेक्निकल एजुकेशन के भी बच्चे हों, जनरल एजुकेशन के भी हों, प्रोफेशनल एजुकेशन के भी हों। आखिर आपस में भी तो आप एक दूसरे से सीखते हैं और फिर सबको निकल के उसी सोसाइटी में जाना है। तो ये हार्ड सेपरेशन को इन्होंने ओवरकम करने की बात की। और मल्टी डिसिप्लिनरी, किसी भी टॉपिक को आप बहुत सारे डिसिप्लिनरी एंगल से पढ़ाइए। देन प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल्स इन एरियाज ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस। जो बहुत, अब देखिए जैसे आपका चंद्रयान लॉन्च हो गया, फिर आपका आदित्य L1 लॉन्च हो गया, तो बहुत ज्यादा इसरो को लेके समाज में और जो स्टूडेंट है फ्रेटर्निटी, उसमें बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी, क्या पढ़ें तो वहाँ पे आप मतलब आपको नौकरी मिल सकती है, कौन से कोर्सेज चाहिए। ये सब अचानक से एक बूम आएगा समाज में कि बहुत से लोग चाहेंगे कि उनकी नौकरी वहाँ लग जाए, उनको वहाँ जॉब मिल जाए। तो हमको ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस के एरियाज में प्रोफेशनल्स प्रिपेयर करने हैं। और क्या करना है? करिकुलम शैल बी रिन्यूड। देखिए वो करिकुलम बदलना होगा। आउटडेटेड करिकुलम का आज के 21st सेंचुरी जमाने में कोई लेना देना नहीं है। इन्फ्यूज्ड विद अ सेट ऑफ केयरफुली सिलेक्टेड मटेरियल फ्रॉम अदर डिसिप्लिन। मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है ना, तो अदर डिसिप्लिन से भी आप केयरफुली सिलेक्टेड मटेरियल ले सकते हैं। कनेक्ट थियरी एंड प्रैक्टिस। जनरली क्या होता है, हम थ्योरी पढ़ाते हैं अपने कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, प्रैक्टिस लेवल पे हम लैक करते हैं। तो जोड़िए उसको, थ्योरी को प्रैक्टिस से जोड़कर चलिए। कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री
इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन कीजिए एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ए वैरायटी ऑफ इंटर्नशिप। जितना ज्यादा बच्चा इंटर्नशिप करेगा, स्टूडेंट इंटर्नशिप करेगा, उतना ज्यादा उसको रियलिटी से उसको पता चलेगा कि एक्चुअली जब वो वर्क प्लेस पे जाएगा तो उसको क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे उनसे डील किया जा सकता है। तो ये सुझाव, ये सजेशंस एनईपी 2020 ने टेक्निकल एजुकेशन को दिए हैं। और क्या कहा है उसने? वो कह रहा है कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स शैल बी रिवाइज्ड to prepare the professionals who are well prepared for both current and future practices। मतलब जो इस वक्त प्रैक्टिस चल रही वो भी, जो भविष्य में आने वाली है। देखिए एक नया टर्म फ्यूचरोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, फ्यूचरोलॉजी में एजुकेशन। क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन है, किस तरीके की कोर्सेज आएंगे, किस तरीके की बात होगी, कैसी जॉब रिडंडेंट हो जाएंगी, कैसी जॉब क्रिएट होंगी, ये सब ध्यान में रखकर कोर्सेज बनाए जाते हैं। ऐसा ना हो कि आज आप पढ़कर निकले हैं और अगले 2-4-5 सालों में वो जॉब ही खत्म हो जाए जिसकी पढ़ाई आप कर रहे हैं, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। And are able to exploit emerging science and technology while being responsive to changing socio-economic and environmental context। आपको पता है कि डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D टेक्नोलॉजी और ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनकी इतनी बात हो रही है, इसका मतलब ये बूमिंग फील्ड है, इसका मतलब ये आगे अभी और बढ़ेगा बिकॉज ये नेसेंट कंडीशन में है। तो इस तरीके का कोर्सेज बनाइए, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम को रिवाइज कर दीजिए इनके हिसाब से। और क्या करिए? इंडिया मस्ट ऑल्सो टेक द लीड इन प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल्स इन कटिंग एज एरियाज दैट आर फास्ट गेनिंग प्रोमिनेंस। आ गया ये, such as AI, 3D machining, big data analysis, machine learning, in addition to health, environment and sustainable living that will be woven into undergraduate education for enhancing the employability of the youth। मतलब अगर आप इस तरीके का एकदम बूमिंग, एकदम कटिंग एज एरिया वाला सिलेबस बनाएंगे, स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, तो इसका मतलब कि आप उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा रहे हैं। देन रिफॉर्म्स इन द लाइट ऑफ एनईपी 2020, यानी कि कुछ एआईसीटीई ने कर दिया है, कुछ पहले से चल रहा था जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ ये अलाइनमेंट है एनईपी 2020 के संग। क्या पहले क्या होता था कि आपको इंजीनियरिंग अगर करनी है तो आपने जरूर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये लिया हो तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। बट ये अब उतना हार्ड बाउंड्री नहीं रह गई है। क्या हुआ है अब? Hard boundaries imposed for entry into all branches of engineering education since long time was affecting access to higher education, higher technical education for those who had not taken these subjects। मतलब अगर हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेके पढ़ाई नहीं की है लेकिन अब हमारा मन कर रहा है कि हम टेक्निकल एजुकेशन में एडमिशन ले लें, तो ये नहीं हो सकता था। तो क्या किया गया? The council was in receipt of many representations from industry as well as student community to give an option to pursue technical courses such as agriculture, biotechnology, information technology, electronics, etc. to students who did not have prior electives of physics and mathematics at +2 level, but had studies relevant portions of the same at +2 level to a certain desired extent। ये कह रहे हैं कि बच्चा एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा कुछ करना चाहता है लेकिन उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपका +2 लेवल पे नहीं लिया है, लेकिन कुछ ऐसा उसने रेलेवेंट पोर्शन पढ़ रखा है, तो हम उसको ऑप्शन दे सकते हैं परस्यू करने का टेक्निकल कोर्स। इसके बाद इन्होंने एक नया भी इसके लिए बताया है, ब्रिज कोर्स, अभी बताते हैं। तो इसी जब ऐसा हो गया, एआईसीटी ने ये तय कर लिया, तो सीबीएसई ने भी चेंज किया। कॉन्सिक्वेंटली सीबीएसई इन its curriculum for science stream has given the subjects of biotechnology, computer science, engineering, graphics, etc। यानी इधर इन्होंने साइंस में कर दिया इसको। फिर क्या किया? तो फिर एनआईओएस को भी करना पड़ा। एनआईओएस क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, क्योंकि कुछ बच्चे ओपन स्कूलिंग से भी 12th पास करते हैं। तो इन्होंने क्या किया? साइंस और हैज आल्सो गिवन सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन देयर एरिया ऑफ साइंस स्ट्रीम। मतलब पूरा इन्होंने चेंज किया, थोड़ा लिबरल हुए, थोड़ा फ्लेक्सिबल हुए। और क्या इन्होंने सुझाव दिया है? कह रहे हैं कि taking a leaf out of NEP 2020, मतलब NEP 2020 भी ऐसा कह रही है, the council has given flexibility, हम थोड़ा नरम पड़ जाते हैं, थोड़ा लचीले हो जाते हैं, to the universities to extend their support to such willing students। वो बच्चे जो करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं अपना कोर्स, अपना करियर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, लेकिन who were hitherto deprived of the same owing to barriers of subjects without affecting the attainment of learning outcomes। लेकिन कोई भी बैरियर रहा हो, उनके मार्क्स कम आए हो, परसेंटेज कम हो, उनके कॉलेज ने उनको दिया ना हो, वो सब्जेक्ट्स को +2 लेवल पे ना पढ़ पाए हो, तो क्या करें? उसके लिए ब्रिज कोर्स बना लीजिए। ब्रिज कोर्सेज हैव बीन रिकमेंडेड फॉर स्टूडेंट्स एंटरिंग इन इंजीनियरिंग फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। मतलब हम कुछ और पढ़कर आए हैं लेकिन हम चाहते हैं पढ़ना टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, तो आपको ब्रिज कोर्स पढ़ा दिया जाएगा ताकि वो जो ब्रिज है, मतलब वो जो गैप है,
उसको ब्रिज कर सके। वो जो गैप है, जो रिक्विजिट हमको चाहिए, प्री रिक्विजिट चाहिए लेकिन हमारे पास हम लैक करते हैं, तो हम ब्रिज कोर्स के तहत आपको लगभग एट पार कर देंगे। और क्या करेंगे? AICTE has been offering lateral entry to students in diploma as well as undergraduate courses in engineering and technology. वो कह रहे हैं कि हम आपको लेटरल एंट्री भी देंगे, मतलब जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लें तभी काम चले। A student wishing to pursue a diploma course is normally class 10 pass out, ठीक है, and as such in the pursuance of diploma remains devoid of basic science courses hitherto available in the plus 2 level. वो कह रहे हैं कि जो अक्सर ऐसा होता है कि मतलब हम प्लस 2 करके या 10th करके डिप्लोमा करने जाते हैं, प्लस 2 करके सर्टिफिकेट करने जाते हैं, कह रहे हैं कि जो डिप्लोमा पास आउट हैं आप उनको लेटरल एंट्री दे दीजिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में। Or it is pertinent to mention here that the lateral entry students seem to outperform the direct entry students in the pursuance of such courses. कई बार ये भी देखा जाता है कि जो मतलब डायरेक्ट एंट्री हुई है उनसे अच्छा कभी-कभी ये स्टूडेंट्स करते हैं। मतलब कहने का ये है कि पीछे फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी ये है कि हमको रिजिड नहीं रहना है कि बस ये नियम है तो नियम है, आपने ये कोर्सेज लिए हैं तभी आपको एडमिशन मिलेगा, आपको फ्रेश एडमिशन ही लेना पड़ेगा। नहीं, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना है। क्यों? क्योंकि थोड़ा स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाइए, थोड़ा चाइल्ड सेंटर्ड हो जाइए। डिप्लोमा वाले को भी एंट्री दे दीजिए, जो नहीं पढ़कर आया है उसको ब्रिज कोर्स से पढ़ा दीजिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ला सके, स्ट्रीमलाइनिंग कर सके उनकी टेक्निकल एजुकेशन में। इन सबके पीछे फिलॉसफी ये है। फिर क्या करें? To facilitate entry into undergraduate program engineering and technology with effect from AY to 2021-2022, मतलब असेसमेंट ईयर AY का मतलब है। और 2021-2022 की बात क्यों हो रही है? क्योंकि 2020 में आई पॉलिसी। तो इन्होंने कहा कि the council has provided a wider array of choice of subjects for students who can pursue the courses in engineering and technology like physics, mathematics, chemistry, computer science, electronics, information technology and so on. तो क्या कह रहे हैं कि इसमें से कोई 3 आपने लिया, अभी मैं सारे पढ़ने रही हूँ, उसमें से कोई 3 विद ए प्रिकॉशनरी एडवाइस टू द यूनिवर्सिटीज टू ऑफर सूटेबल ब्रिज कोर्सेज। और यूनिवर्सिटी को कह दिया कि आप ब्रिज कोर्सेज बनाइए, अगर इनमें से भी कोई 3 लिया है बच्चे ने तो आप उसको पढ़ा दीजिए, उसको एडमिशन लेने दीजिए, सच एज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, ड्राइंग एक्सेट्रा फॉर द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स टू फर्स्ट अचीव लेवल प्लेइंग फील्ड, टेकिंग केयर ऑफ प्री रिक्विजिट्स एंड डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स ऑफ द प्रोग्राम। देखिए बार बार लर्निंग आउटकम की बात आ रही है। लर्निंग आउटकम क्या है? जब भी कोई कोर्स बनाया जाता है, जब भी कोई मॉड्यूल बनाया जाता है, तो सबसे पहले उसका लर्निंग आउटकम हमको निर्धारित करना होता है, डिटरमाइन करना होता है। देखिए अगर आपने कुछ मॉड्यूल पढ़ते होंगे आप, तो उसमें लिखा रहता होगा कि आफ्टर गोइंग थ्रू दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डू दिस एंड दैट। यानी कि जो बनाने वाला है, जो प्लानर है, जो पॉलिसी मेकर है, उसने पहले से तय कर लिया है कि ये अगर आप पढ़ लेंगे तो ये हासिल कर पाएंगे। लर्निंग आउटकम, लर्निंग किसकी हो रही है? लर्नर की हो रही है, स्टूडेंट की हो रही है। तो उसके पास ये आउटकम हो, इतनी स्किल हो, तब तो इस पढ़ाने का कोई अर्थ है। तो मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात है और कोई नहीं। फिर क्या कह रहे हैं? मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट बहुत पॉपुलर टर्म हो गया है NEP 2020 के बाद। मल्टीपल एंट्री मतलब कई बार आप एंट्री कर सकते हैं, कई बार एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन ये है ना कि अब कोई चीज हिंदुस्तान में आ जाएगी तो उसके मिसयूज भी शुरू हो जाएंगे। खैर हम सही दिशा में बात करते हैं कि मल्टीपल एंट्री हैज ऑलवेज बीन देयर इन डिप्लोमा एंड अंडरग्रेजुएट लेवल्स ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी थ्रू लेटरल एंट्री। कह रहे हैं कि एकदम कोई नई बात नहीं है, पहले भी होता रहा है, लेकिन NEP ने मल्टीपल एग्जिट की बात की, मल्टीपल एग्जिट की बात पहले नहीं थी। तो कह रहे हैं कि एज इन द केस ऑफ वोकेशनल कोर्सेज वेयरइन ईच लेवल क्वालिफाइड हैज इट्स इंडिविजुअल रेलेवेंस। अभी बात हुई ना कि फर्स्ट ईयर पढ़ लेंगे तो हमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकेंड ईयर पढ़ लेंगे तो डिप्लोमा मिल जाएगा, थर्ड ईयर पढ़ लेंगे तो डिग्री मिल जाएगी। तो एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इनटू एप्रोप्रिएट प्रोग्राम कोर्सेज। तो इससे क्या होगा? NEP 2020 showcases the use of ABC which shall ensure that the level of study already completed by an incumbent does not go in vain। सारी बातें किस लिए हो रही हैं? कि आपकी पढ़ाई बर्बाद ना हो, आपका साल बर्बाद ना हो, आपका समय खराब ना हो, and can be used as an eligibility to complete the desired course at a later stage। यानी कि पहले अगर आपने 1 साल पढ़ के छोड़ दिया तो 2-3 साल बाद आप फिर सोच रहे हैं कि ये वाला कोर्स कंप्लीट कर लेते तो आपको फ्रेश एडमिशन लेना पड़ता था। लेकिन अब है कि वो आपका बर्बाद नहीं जाएगा, खराब नहीं होगा, आपके ABC में वो क्रेडिट अर्न डिजिटली स्टोर रहेगा। आप लेटर स्टेज बाद में वो भी, लेकिन उन्होंने गैप दिया, ऐसा नहीं 20-25 साल बाद हमको याद आ रहा है कि हमको कोर्स करना है, नहीं, वो शायद 6-7 साल है कि विद इन दैट टाइम स्पैन आप दोबारा से उस कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं तो जितना पढ़ा है उसके बाद एडमिशन ले लीजिए, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ये बात। Then
और क्या कह रहे हैं वो कि NEP 2020 envisages the availability of higher technical education in Indian regional languages। ये बात पहले भी हो गई कि आप सिर्फ इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मत रखिए। क्यों मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हो रही है? क्योंकि कहा जाता है कि हमारा जो हमारा कैन से जो ओरिजिनल इनोवेशन होता है, जो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन होता है, वो हमारी मदर टंग में ही होता है। हम जितना अच्छा हिंदी लिख सकते हैं, जितने अच्छे मनोभाव, उतना अच्छा इंग्लिश नहीं लिख सकते, शायद पढ़ समझ सकते हैं। तो क्यों ना बच्चे को उसकी मातृभाषा में, उसकी रीजनल लैंग्वेज में, उसकी इंडियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। उसके पीछे बेसिक फिलोसफी ये है। तो AICTE shall permit autonomous accredited institutions seeking approval for running technical courses in Indian regional languages। देखिए, आपने स्वयं का नाम सुना होगा, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ऐसे करके बहुत सारे कोर्सेज उस पे हैं। उसपे भी जो उसका कोर्स कोऑर्डिनेटर है, जो चैप्टर है, लोकल चैप्टर, वो अब चाह रहे हैं कि हम सारे कोर्सेज को सभी भाषाओं में ट्रांसलेट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसे पढ़ सके, उससे बेनिफिटेड हो सके। तो आजकल इसकी बड़ी बात है। और the council seeks to integrate vocational courses with conventional technical courses as a skill enhancer for students। वो कह रहे हैं कि कन्वेंशनल टेक्निकल कोर्स में वोकेशनल कोर्स को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, वोकेशनल कोर्सेज में क्या होता था, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ज्यादा होती थी, तो बच्चे की स्किल और बढ़ जाएगी, स्टूडेंट आपका और बढ़िया स्किल्ड हो जाएगा। और NEP envisages no demarcation। बार की दूसरी तीसरी बार ये बात आ रही है कि हमको कोई डिमार्केशन नहीं करना है वोकेशनल और जनरल एजुकेशन में, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एजुकेशन में, बाय ब्रिंगिंग द कॉमनैलिटीज इन लर्निंग आउटकम्स एट डिफरेंट लेवल्स। जो जनरल एजुकेशन की का लर्निंग आउटकम है, जो टेक्निकल का है, उसको थोड़ा सा मिला दीजिए आपस में, अपने आप उसके बीच का सेपरेशन खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। और फ्यूचर चेंजेस, मतलब टेक्निकल एजुकेशन में भविष्य में क्या चेंज NEP ने सोचा है, 2020 ने बताया है हमको कि ऐसा होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि कालांतर में थोड़े समय बाद आप टेक्निकल एजुकेशन को जनरल हायर एजुकेशन का हिस्सा बना दीजिए। टेक्निकल एजुकेशन इज पार्ट ऑफ जनरल हायर एजुकेशन as technical education will be merged into the general higher education। कह रहे हैं मर्ज कर दीजिए। तो क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि UGC, AICT, NCT सबको हटा दीजिए, सिर्फ एक सिंगुलर हायर एजुकेशन कमीशन इंडिया का होगा, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, will be set up as a single overarching umbrella body for entire higher education, एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एक्शन। यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेडिकल को इन्होंने अलग किया है, और लीगल, क्योंकि लॉ को आपका पता है, आपको BCI देखता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और मेडिकल को भी इसी तरह से MCI देखता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो कह रहे हैं उन दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी सारी तरीके की पढ़ाई लिखाई को एक तरफ ले आइए। तो क्या करेंगे, आपको पता है कि UGC है, उसका अलग काम है, NAC है, उसका अलग काम है, सब बहुत सारे काम है, तो नए हमको बनानी पड़ेंगी ना काउंसिल। तो कह रहे हैं कि 4 बनाइए बस, बाकी कोई कहानी नहीं रहेगी, सिर्फ HECI रहेंगे और उसके 4 वर्टिकल। क्या करेंगे वो वर्टिकल, जो पहला वर्टिकल है उसका नाम उन्होंने दिया है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। तो आपको पता हो गया, रेगुलेशन का काम इसका हो जाएगा। इट विल फंक्शन एज द कॉमन सिंगल पॉइंट रेगुलेटर फॉर द हायर एजुकेशन सेक्टर, इंक्लूडिंग टीचर एजुकेशन एंड एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। यानी कि आप NCT भी डिसॉल्व कर दीजिए, AICT भी डिसॉल्व कर दीजिए, सब डिसॉल्व कर दीजिए, मेडिकल लीगल को बस अलग छोड़िए, बाकी सारी प्रकार की शिक्षा दीक्षा का जो रेगुलेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ NHERC करेगा, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। दूसरा क्या कह रहे हैं कि आपको पता है कि NAC हम लोगों की ग्रेडिंग करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की। तो वो कह रहे हैं NAC का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। लेकिन उन्होंने आपकी असेसमेंट हटा दिया। वो कह रहे हैं कि एक काउंसिल रखिए सिर्फ क्या, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल, और यही सबका एक्रीडिटेशन करेगी। इसको मेटा एक्रीडिटिंग बॉडी कह रहे हैं। और तीसरा क्या है, ग्रांट्स कौन देगा, अभी तक तो UGC देती है। तो वो कह रहे हैं कि द थर्ड वर्टिकल ऑफ HECI विल बी द हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, इसको HEGC कह रहे हैं, व्हिच विल कैरी आउट बाय फंडिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया। मतलब ऑब्वियसली जब से सब कुछ डिजिटल हो गया, ऑनलाइन हो गया, तो अपने आप ट्रांसपेरेंसी आ गई है। और जो फोर्थ वर्टिकल होगा वो जो मतलब बताएगा कि क्या हमारा पढ़ाई लिखाई कैसी होनी चाहिए, लर्निंग आउटकम क्या होगा, कोर्स करिकुलम क्या होगा, उसको नाम दिया है जनरल एजुकेशन काउंसिल। इसका क्या काम है, which will frame expected learning outcomes for higher education programs, also referred to as graduate attributes। देखिए मैनेजमेंट वगैरह में इसको ग्रेजुएट एट्रीब्यूट कहते हैं, मतलब जो ग्रेजुएट निकल रहा है उसकी क्या गुण होने चाहिए, और बाकी सब जगह इसको लर्निंग आउटकम के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क विल बी फॉर्मुलेटेड बाय द GEC, यानी कि जनरल एजुकेशन काउंसिल एक बना दे, NHEQF बना दे, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो हर लेवल के लिए, हर प्रकार की शिक्षा के लिए लर्निंग आउटकम बना देगा। और
लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन्होंने कहा कि इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन का कोलैबोरेशन बढ़ा दीजिए, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन के बाद हमको डायरेक्ट इंडस्ट्री में जाना है, तो कोलैबोरेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमको समझ में आएगा, मिसमैच नहीं होगा ना, कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जैसा हम स्टूडेंट बना रहे हैं, वैसा ही इंडस्ट्री को चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिसमैच होता है, इसीलिए इतनी बेरोजगारी है। खैर, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एंड इंक्यूबेशन सेल्स विद जॉइंट फंडिंग इन इंस्टीट्यूशंस। आप इंडस्ट्री के सेंटर बना दीजिए, इंक्यूबेशन सेल बना दीजिए, उसमें बच्चे काम करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो वो ज्यादा बेटर प्रिपेयर होंगे इंडस्ट्री के लिए। फिर अपॉइंटिंग फैकल्टी विद रिसर्च एंड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इन एडिशन टू एकेडमिक क्वालिफिकेशन। जो इस तरीके के इंस्टीट्यूशन में जो आप फैकल्टी रिक्रूट कीजिए, उसके पास अगर रिसर्च और इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस हो तो बहुत बढ़िया है। फिर ऑफरिंग पोजीशंस टू सिलेक्टेड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ऑन बोर्ड्स ऑफ स्टडीज एंड एडजंक्ट फैकल्टी। देखिए, एक बात की जा रही है प्रोफेसर एक्सीलेंस रखा जाएगा, मतलब जरूरी नहीं है कि उसने प्रोफेसर हो, वो मतलब डॉक्टरी की हो, पीएचडी हो, असिस्टेंट एसोसिएट हो के प्रोफेसर बना हो, अगर उसको उस फील्ड की बहुत बढ़िया नॉलेज है तो उसको आप डायरेक्ट प्रोफेसर रिक्रूट कर सकते हैं। लेकिन उस पर बहुत वाद विवाद भी होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, आप उनको बोर्ड ऑफ स्टडीज में मेंबर रख लीजिए, ताकि वो उस तरीके के सॉल्यूशंस देंगे, सजेशंस देंगे हमको, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को जानते हैं, उनको एडजंक्ट फैकल्टी बना लीजिए। और क्या कर सकते हैं, क्रिएटिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर्स स्पेशली इन नियर बाय इंडस्ट्रीज टू डेवलप प्रोडक्ट्स फॉर लोकल नीड्स, जानते हैं आप लोग। फिर यूजिंग हाईली एडवांस्ड रिसोर्सेज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, particularly by sharing expensive equipment with industries or by using virtual laboratories to access resources located elsewhere। सबको पता है कि हमारे यहाँ फंडिंग की दिक्कत है, रिसोर्स नहीं है, तो जो हम शेयर कर सकते हैं एक्सपेंसिव इक्विपमेंट इंडस्ट्री के साथ। इंडस्ट्री में है, हमारे इंस्टीट्यूशन में नहीं है, तो आप अपने स्टूडेंट्स को वहाँ भेज सकते हैं, कुछ कोलैबोरेशन कर लीजिए, कुछ शेयरिंग कर लीजिए, ताकि बेटर एक्सपीरियंस आप अपने लर्नर्स को दे सकें। तो ये सब इन्विजन किया है NEP 2020 ने, कि अगर ऐसा कर लें तो हम हासिल कर पाएंगे कुछ अच्छा, हम कुछ ग्लोबल वर्क क्या ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बन जाएंगे, इस तरीके का। तो अभी तक इम्प्लीमेंट तो नहीं कर पाए हम लोग, लेकिन बातचीत तो खैर अच्छी की है NEP 2020 ने। तो कंक्लूड क्या कर सकते हैं हम कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी इन ट्रू स्पिरिट, मतलब एक्चुअली जैसा कह रहा है वैसा अगर हम कर पाए इसको इम्प्लीमेंट, विल ट्रांसफॉर्म हायर एजुकेशन एज वेल एज टेक्निकल एजुकेशन इन द कंट्री। तो निश्चित रूप से हमारे देश की उच्च शिक्षा और जो टेक्निकल एजुकेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बदल जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। इट वुड सेट इंडिया ऑन द पाथ फॉर ग्लोबल एजुकेशनल लीडरशिप एंड पेव वे फॉर अटेनिंग द पास्ट ग्लोरी, अट्रैक्टिंग इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। पास्ट ग्लोरी मतलब कहते हैं ना कि नालंदा विश्वविद्यालय था, पूरे विश्व भर के स्टूडेंट्स वहां पढ़ने आते थे, इतना बढ़िया था, सब बढ़िया था। तो जो ग्लोरी हम मिस कर चुके हैं उसको हम फिर से पा सकते हैं अगर हम ऐसा कुछ करें। तो इन ड्यू कोर्स इट विल आल्सो हेल्प इन अचीविंग द लॉन्ग चेरिश्ड गोल ऑफ सम ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज गेटिंग इनटू द टॉप 100 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। तो अगर ऐसा हो, हम वाकई इसको इम्प्लीमेंट कर पाए, ट्रू स्पिरिट में कर पाए, तो हो सकता है जो हमारा इतना लॉन्ग चेरिश्ड गोल है, कब से हम चाह रहे हैं कि हमारी कोई यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में आ जाए, वैसा हो सके शायद। Okay, so thank you all, and I am stop sharing now. Thank you. Thank you, ma'am, so much for these enriching elaborations and detailed analysis of NAP 2020 that will probably give a possibility and a pathway to our students, newly admitted students. Thank you once again from Haldia Institute of Technology Thank you, for thank being you, so sir. It's kind my to pleasure. give your precious time to us for our students. Thank you so much, ma'am, once again. Welcome, sir. Ma'am, there is one question. Would you like to take that question? Yes, sir, please. AICT rules told us to learn in mother tongue, but why I read in English and Hindi? क्योंकि अभी ये कहा ये प्रपोजल है, इम्प्लीमेंटेशन तब होगा जब उतने तरीके के फैकल्टी मेंबर होंगे, उतनी तरीके का टेक्स्ट ये ट्रांसलेट कर पाएंगे। अभी तो इन्होंने प्रपोज किया है ना, इसीलिए तो इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है। इसीलिए तो नहीं तो 2020 में लॉन्च हुई, 2021 में इम्प्लीमेंट हो जाती। अभी तक हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग NEP 2020, ये सब इतना इन्विजन, इसीलिए तो उसने कहा है 2030 तक हम ये पालेंगे, 2035 तक ये पालेंगे, 2050 तक पालेंगे। फ्यूचर गोल है, फ्यूचरिस्टिक विजन है कि अगर ऐसा हो जाए तो बढ़िया हो, ऐसा हो जाना चाहिए। तो उसमें काम चल रहा है, जब हो जाएगा तो जरूर हमको रीजनल लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे कोर्सेज और हमारा इंस्ट्रक्शन।
Okay, ma'am. Ma'am, thank you once again for being so kind and Thank you, for sir. being with us for the last 1 hour. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Thank you from my end too. Okay. May I leave now? Sure, ma'am. Sure, ma'am. Okay, thank you. Now, there will be a 5 minute break in the program. Just after 5 minutes, we will continue, and my colleague, Mr. Biman Mondal, will take over. Thank you. So, good afternoon, sir. Soumitra, sir. Good afternoon, everybody. And sir, the students are here since last 2 hours, so that's why we are going for a 5 minutes break, and we'll resume sharp at 1 p.m. Okay, sir. Okay, no problem. So Yes, sorry, carry on, sir, please. for No, keeping no, you no, no problem. waiting. Please Yeah, carry on. Just give them back. yes, sir. Thank you so Okay, much, sir. sure.
Okay, so mostly old faces are there. How are you guys? সবিতা Yeah. কেমন আছেন? Yes, hello. Ah, Dibba madam. আপনি খাওয়া দাওয়া করেছেন তো? সৌমিত্রদা Ah, সমিতা বলছি আপনি খাওয়া দাওয়া করে বসছেন তো? yeah, তুমি যে বললে খাবার পাঠাবে অনলাইনে, ধুর ধুর। হ্যাঁ? এই সকালে ফোন করে আমাকে বললো যে তুমি কিছু খেয়ে নাওনি তো, তাহলে কি বোঝায়? কি বলবো? ও দেখো বারবার কিন্তু আমার কাছে এটাই খোঁজ নিচ্ছে আমি খেয়েছি কিনা। আমি তো সেই জন্য ভেবেছি তাহলে নিশ্চয়ই আজকে সুইগি বা জোম্যাটো কিছু একটা আসছে বাড়িতে। আমি জানি তো আপনি কি উত্তর দেবেন। আমি জানি আপনি বলবেন যে আমি চা মুড়ি খেয়েছি। আমি তো জানি। আর আপনি তো ভাত খাবেন 5টার সময় না 4টার সময়। ঠিক আছে, 4টার সময় এলেও কোনো অসুবিধা নেই আমার। বুঝলে আপনার দিব্যা? বাড়িতে কি নিরামিষ? আপনার কি নিরামিষ হয়েছে আজকে জন্মাষ্টমী বলে? স্পেস করে অর্ডার দিলেও কোনো আপত্তি নেই। আপনি আসল লাইনে আছেন। আপনার কি নিরামিষ না আমিষ আছে বাড়িতে? Okay. ওকে। Welcome back. Ivan sir, over to you. Biman sir, please unmute yourself. Hello. Good afternoon to all of you, my faculty members and all my beloved students who are present on the dais. For a long time, we have learned different dimensions of the knowledge because we know that knowledge is limitless. And we have got another speakers on this dais, and he has vast experience on higher educations. And students, I think that you have already learned different dimension of the knowledge, and knowledge is limitless. And the more you gain, the more you knowledge you can achieve. Because knowledge is like a arch, okay, knife arch. The more you burn, the more you knowledge. So today we have got another speaker, resource persons. And first of all, let me introduce himself. He is a Dr. Shomik Thakor, received PhD in 2016 from Indian Association for Cultivations of Science. He spent 4.5 years in Nanoscience Technology Center, USA, as a research scientist, and he published 90 papers in international reputed journals, and he has 4 US patents, and he has joined in HIT 2017 assistant professor, and then he becomes associate professor in our college. After that, he becomes a principal of a government college. Name of the college, Navagram Amor Chandra Kundu College in 2023. He has vast experience. His topic is today higher education opportunities for engineering students, and he will deliver his valuable lecture. And thank you, sir, giving us an opportunity and give us time, your valuable time to us. Thank So you, it is over Biman to sir. sir. Okay. Okay. Thank you, Biman sir. Yes, sir. Thank you, everybody, and good afternoon to all of you. First of all, being an ex-HITian, I feel privileged to back here, and thank you guys for giving me the opportunity to, get another chance to be on with you guys and sharing my experience with the students. Um, Although still I don't see any students over here, I hope they might join. Okay. So basically, today I will share my experience in the field of research and higher education during my course of journey since 2006. When I got my PhD degree from Indian Association for the Cultivation of Science, the Asia's oldest research institute and the only research institute in India, from where scientists who worked over there and received his Nobel Prize for his work in India. So I feel proud for that, you know, the organization which is IACS Kolkata. Though only few people know about IACS, people know IISc Bangalore. You just say IISc Bangalore, most of us, even students, recognize. But if you see IACS
hardly people recognize now. If you say cultivation of science, lots of time people ask us that what kind of cultivation you guys do over there. So anyway, since after that, I spent quite a few years in US and visited few countries in UK. And during that time, initially I went US to US as a postdoc. Then I started a little independently as a research scientist. And during that time, I mentored lots of students. And during that period, actually, my perception about higher education got changed, because since Bengali, we had a huge Bengali society over there. And at that time, basically, before that period, actually, I used to think only people from science background, they go for PhD and higher education, and engineering students or medical students, they you know get a good job in MNC's, multinational company, and they spend lavish life. But actually, when I was there in US at that time, I realized that research is not a field of physics, chemistry, biology. Research is something which is much vast or wider horizon. It does not have any boundary, does not belongs to physics, does not belongs to chemistry or such and such things. Okay, because whatever in the modern era we are living, all the modern amenities, starting from our lifestyle amenities to our life saving amenities, medicines, other stuffs, everything comes to us through a vast research field. And during that time only, I encountered lots of my friends who were basically from engineering background, and I have lots of my friends in USA who were doing their PhD or higher education, who used to be students from Macout itself. At that time it was Macout, and now it's now name is not Macout. Sorry, earlier it is WBAT, now it is Macout, right? So uh, during that time I have seen that, uh, and also I had an idea about previously that only people from IITs, or if you are extremely brilliant, or you have a if you are studying in presidency college, might be, then you can only think about doing research abroad. But while I was in USA and interacting with lots of students from India, not only Bengali students, people from all over Indian territories, that we have, I came across that lots of people who were doing their PhD. Uh, at that time, I realized that for so-called our Indian concept that you have to be extremely meritorious, be brilliant, or something like that, so that you can, get a chance abroad. But at that time, I realized that um, if you want to study abroad, either your father must be Mukesh Ambani or Shah Rukh Khan, or the second thing is that you must have, like earlier I used to thought that you are extremely brilliant, but when I interacted with people, then I came to know that no, you don't have to. Like, if you just are your means you if you really wish to go and study, then that is enough. Means what is your educational background before that is not such important. It's not only HITN, even students from really uh, small town colleges or so-called unknown colleges, they also study abroad and shine in their life. So basically, I thought that students might be, lots of students might be here like the earlier yet. So that's why I have prepared a small PPT. Mm, so let me share that. Let me see that. Okay. So is the PPT visible? Yes, it is visible. Okay, thank you. So basically, when during my stay at HIT itself, I joined at 2013. Then almost 10 years I spent over there. Then we have interacted with lots of students and tried to encourage them
And during the interaction, whenever we used to talk to them regarding higher education, the most common question I have faced, that higher education, why? Right? So that's why basically I have given a question mark here, that higher education, lots of people think that it's a basically setback, that if you don't get any job in your campus interview, then your spend some money from your parents' purse and go for higher education. So that was the most common concept among the students, that basically as a engineering student, BTech students, once you have BTech degree, only what you should aspire to, or to get, is that a big first of offer after your BTech during your campus interview itself. So that's why most of the people used to think that if you get uh, to higher education, that is only after you failed in your attempt to get a job in your campus interview. So that's why my question, or I just put a question mark, that is that really setback, or this is a better opportunity. So I will try to focus on this point only, that whether higher education we should, especially the students should consider this as an opportunity or setback. Anupam sir, Anupam sir, or Shubhankar sir. বলুন স্যার। If like যদি স্টুডেন্টরা থাকে, if we need to, then I can speak in Hindi or Bengali also. স্টুডেন্টরা ইউটিউবে আছে, হ্যাঁ স্টুডেন্টরা ইউটিউবে আছে, আপনি বলতে পারেন। It's okay. So like earlier also, basically मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं तो है ही नहीं, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट के हिसाब से जो पहले आते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग करके एक जॉब चाहिए, कैंपस में एक अच्छा खासा पैकेज मिल जाए तो बस लाइफ सेट है, नहीं मिला तो पापा तो है ही, हमें फंड करने के लिए कहीं पे एमटेक कर लेंगे, ठीक है। तो यही नॉर्मल एटीट्यूड होता है। तो क्या यही सही है, या हायर एजुकेशन एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है? सो आई विल फोकस ऑन दैट एंड आई विल ट्राई टू answer it a little bit. Okay. And again, like my title slide, so if you see, I have put lot of exclamatory marks and question marks, and the during my interaction, जब मैं स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता था, तो जो जो क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट से सुनने को मिला है, तो वही मैं इधर पुट कर दिया, ठीक है। तो पहला क्या है कि क्यों हायर एजुकेशन में जाएंगे हम, বুঝছেন না, যে কেন হায়ার এডুকেশন এত কিছু থাকতে আমি তো জব করতে এসেছি, আমি আই হ্যাভ নট গন টু আ বিগ নলেজ বেসড ডিগ্রি কোর্স লাইক বিএসসি বিএ, তো আই হ্যাভ ফেয়ার ফর আ টেকনিক্যাল এডুকেশন, দ্য অনলি थिंग आई नीड इज जॉब। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट सर मुझे एकेडमिक्स में नहीं ज्वाइन करना है, मुझे प्रोफेसर नहीं बनना है आप लोगों की तरह, तो अगर मुझे पढ़ाना नहीं है, टीचर नहीं बनना है, तो मैं हायर एजुकेशन लेके एमटेक पीएचडी डिग्री लेके क्या करूं? दैट इज अनदर क्वेश्चन आई हैव फेस्ड फ्रीक्वेंटली, ठीक है। क्योंकि ये कंसेप्ट है कि हायर मतलब एमटेक पीएचडी डिग्री से मुझे चाहिए टीचर बनने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो स्टूडेंट कुछ होते थे, चलो कर लेंगे, लेकिन कौन सा करे सर, एमटेक एमई एमएस पीएचडी इतने सारे नाम सुनने को मिलता है, इनमें से कौन सा करे, ठीक है। और इसके बाद आता है कहाँ करे, हमारा एचआईटी में ही एमटेक करे, बाहर करे आईआईटी में करे, या कहीं बाहर देश के बाहर, ठीक है। तो जब भी मैं बोलता था कि चलो अगर तुम्हें हायर एजुकेशन करना ही है, आईआईटी में क्यों, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मैंने फेस किया कि वो बोलते थे चलो आईआईटी में एमटेक करना है सर, तो या एमई करना है। तो मैंने जब पूछा चलो आईआईटी तक सोच ही लिया, तो बाहर क्यों नहीं, यूएस में क्यों नहीं, यूके में क्यों नहीं, जर्मनी में क्यों नहीं? तो मैंने जो देखा उन स्टूडेंट्स का फेस में ना, एक मतलब क्या बोल रहे हो आप, हाँ हम लोग एचआईटी में पढ़ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि सपना देखो एचआईटी के बाद तुम यूएस में हो, जर्मनी में हो, राइट? इज इट रियली पॉसिबल? अगर पॉसिबल है तो सिर्फ पैसा कौन देगा, आप?
ठीक है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि चलो HIT में पढ़ने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई हैव सीन, दे हैव टेकन लोन, आइदर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बैंक लोन, or there are few fortunate students whose parents are, spending their hard-earned money for their student, for their child, so that they can excel in their life, right? तो अगर बीटेक करने में इतना दिक्कत है पैसा जुगाड़ करना, तो फिर आप बोल रहे हैं कि बाहर जाओ, तो उधर का पैसा कौन देगा, है ना? वैलिड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन का भी आंसर देने के लिए। और उसके बाद जो आता है, मैंने सिर्फ पेरेंट्स लिखा, लेकिन इसके साथ और भी कुछ था कि सर आप तो बोल रहे हैं कि चलो पढ़ाई करो, हायर एजुकेशन मतलब पढ़ाई है, तो फिर कितने दिन तक मेरे पापा वेट करे कि बेटा कब या बेटी कब कमाएगी, ठीक है? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में मनी इज हनी, राइट? विदाउट मनी नोबडी केयर्स, ठीक है? इवन आफ्टर सम टाइम इफ यू डोंट अर्न मनी, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो दोस्त भी साथ छोड़ देगा, जो तुम्हारा स्पेशल दोस्त बन जाएगा कॉलेज में, क्योंकि बनना पड़ता है, राइट? लाइफ में जो वो स्पेशल दोस्त होती है वो होता है। अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा जॉब नहीं मिला तो तुम्हारा ही बेस्ट फ्रेंड का हाथ पकड़ के वो निकल जाएगा। कुछ दिन बाद मम्मी पापा भी पेशेंस लूज कर लेगा, ताना देने लगेगा कि तू तेरे पीछे इतना पैसा खर्च करके क्या हुआ, कमा नहीं रहा है। हाँ? गलती से अगर वो स्पेशल वाला फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, उसका पापा बोलने लगेगा ठीक है तुम कहीं और देख लो, मैं मेरा बेटा बेटी के लिए दूसरा देख लेता हूँ। तो ये सिचुएशन बहुत ट्रिकी है ना? तो इसके लिए क्या करें, कितना देर तक, तो देखते हैं। और सबसे अहम क्वेश्चन जो पूछते हैं, सर आप सोचिए कि मेरे बैच से कुछ दोस्तों को कैंपसिंग में जॉब मिल जाता है, ठीक है? उसके बाद मैं हायर एजुकेशन में चला जाता हूँ। अब सोचिए उसका तो 2 साल 3 साल में प्रमोशन होता रहेगा। मैं अगर एक हायर एजुकेशन लेके 3 या 4 साल बाद ज्वाइन करूंगा तो मैं तो पीछे ही रहूंगा ना, तो फिर क्यों हायर एजुकेशन के लिए कोशिश करें, राइट? तो ढेर सारे क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स का माइंड में आता रहता है। कभी मेरा भी, मैं भी जब स्टूडेंट था ऐसा भी कुछ आता था, ठीक है? तो एक्सपीरियंस के साथ मुझे ये सारे क्वेश्चन का कुछ कुछ आंसर मिला है, तो आई विल ट्राई टू शेयर माई experience, okay, or maybe those answer which I have found out, I will try to share with you guys, right? So let us see, मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, why should I go for higher education, ठीक है? जो लोग तुम क्रिकेट देखते हो, ठीक है, वो बोला जाता है ना कि अगर किसी ऑप्शन से ऑफसाइड में बैट्समैन ऑफसाइड में स्ट्रोक खेल सकता है, तो बॉलर जो है वो ऐसे ही बॉल करेगा कि तुम्हें लेग साइड में खेलना है, तुम आउट हो जाओगे। अभी देखो हमारे इंडियन टीम जब क्रिकेट के लिए सिलेक्ट हुआ है ना, कुछ दिन पहले तो जो चाहल था वो सबसे अच्छा बॉलर था, अभी उसको नहीं मिला क्योंकि उसको बैटिंग नहीं आता है। अक्षर पटेल को मिल गया चांस, जो एज ए बॉलर चाहल से पीछे है, लेकिन उसको थोड़ी बहुत बैटिंग भी आता है। तो ऐसे सोचो तुम अभी फर्स्ट ईयर हो, राइट? एज ए स्टूडेंट यू आर इन द फर्स्ट ईयर, क्या तुम्हें, यू आर श्योर कि तुम्हें 4th ईयर में जाके तुम्हें जॉब मिल जाएगा गूगल में या इवन इन्फोसिस में? अगर नहीं मिला तो पहला चीज जो है कि एज ए स्टूडेंट तुम जब इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, तुम्हें जानना है कि क्या क्या ऑप्शन मेरे पास है, देन आई कैन सिलेक्ट। अगर मुझे पता है मेरे पास 10 ऑप्शन है, देन आई कैन थिंक अबाउट व्हिच वन इज बेटर फॉर मी, और मे बी उनमें से 2-3 ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन ही नहीं पता है तो सिर्फ कैंपस इंटरव्यू बस, और वो जैसे ही वो नहीं मिला तो बस, मतलब जैसे जिंदगी खत्म। ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है? तो और बेटर अपॉर्चुनिटी क्या है? नॉर्मली मैंने जैसे पहले ही बताया था, लोग हायर एजुकेशन को अल्टरनेटिव सोचते हैं कि चलो अगर जॉब नहीं मिला तो, ठीक है,
क्या हम इसको ऑल्टरनेटिव नहीं है, बेटर अपॉर्चुनिटी सोच सकते हैं कि हायर एजुकेशन कैन बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी देन जस्ट गेटिंग ए जॉब आफ्टर बीटेक? ठीक है, क्योंकि अगर सही जगह पे तुम्हें हायर एजुकेशन का मौका मिले, चांस मिले, तो ये हायर एजुकेशन के टाइम ही तुम पैसा कमा सकते हो. यू कैन अर्न मनी व्हाइल स्टडिंग. नॉर्मली क्या होता है, पढ़ने के लिए हमें पैसा देना पड़ता है, लेकिन अगर तुम ठीक से जानो कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो तुम ऐसे भी जगह पे हायर एजुकेशन में जा सकते हो जहां पर पढ़ाई करने के टाइम ही तुम्हें पैसा मिल सकता है, और वो आफ्टर getting that higher education degree you don't have to find job will find you. ऐसा भी ऑप्शंस है. ठीक है, विथ टाइम आई विल टेल यू मोर अबाउट इट. सो अभी तो फिर व्हाई का आंसर यही है कि हायर एजुकेशन इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी, नॉट एन अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी ऑफ कैंपस जॉब. अभी सेकंड क्वेश्चन मैंने क्या बताया था कि मुझे तो टीचर नहीं बनना है. ठीक है, इसका भी जो है आंसर है ना कि सिर्फ टीचर लोग ही पीएचडी नहीं करते हैं, वो एक ऑप्शन है. तुम्हारे जैसे मैंने कहा था ना, जो जब प्लेयर खेलते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, तो अगर तुम्हारे पास एक ही किस्म का है तो फिर तुम्हें बाकी लोग खेलने नहीं देगा. लेकिन अगर तुम्हारे पास सब काइंड का शॉट है, देन नोबडी कैन ब्लॉक यू. ठीक है, ये जो नॉर्मली तुम लोग जो इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जॉब मिलता है ना, दे ऑल्सो हैव एन R&D सेक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन, जहां पर इवन जो कॉर्पोरेट कंपनी तुम्हारा इन्फोसिस है, वो है ना, उधर भी 3-4 किस्म का एम्प्लॉई है. एक तो मैनेजरियल जो के होता है, जो MBA वगैरह करके घुसते हैं, और एक होता है जो वर्कर सेक्शन, जो नॉर्मली इनिशियल डेज में हमारा इंजीनियर लोगों को हायर करके लेके जाते हैं. उसके बाद उन लोगों का एक डेवलपर सेक्शन है जो थोड़ा एडवांस चीजें करते हैं, और उसके ऊपर वो लोग हैं जो नया चीज करते हैं, नया चीज बनाते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, मतलब या तो कुछ और हो. The fields like chemical, biotechnology, okay, you have even mechanical up to certain extent, electronics, you have a wider range. अगर तुम क्या नहीं कर सकते हो, तुम पूरा सब कुछ बदल सकते हो. अभी तो तुम लोग HIT में आ रहे हो, यू शुड फील प्राउड. अभी HIT में आते आते ही देखोगे तुम्हारे सीनियर भैया लोग इसरो में हैं, जो लोग चंदा मामा में लैंड करने के लिए उधर थे टीम में, राइट. अभी जो सोलर मिशन चल रहा है इसरो का, उधर भी हमारे एक से HITians है. ठीक है, तो वो अगर सिर्फ यही सोचते थे कि अगर इन्फोसिस में जॉब करना है, ऐसा है, तो दे कुड नॉट हैव रीच दिस प्लेस. ठीक है, सो दैट मीन्स हायर एजुकेशन सिर्फ टीचिंग के लिए नहीं है. इंडस्ट्री जॉब या तो मल्टीनेशनल कंपनी जॉब में भी जरूरत होता है, और जो लोगों को उस पोजीशन में हायर किया जाता है, उन लोगों का सैलरी पैकेज बहुत ज्यादा होता है जो बिगिनर्स लेवल, बीटेक लेवल में होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या करना है, कि ये जो इधर इतने सारे एमटेक है, एमई है, MS है, PhD है, और ठीक है, तो इनमें से क्या है, ये एमटेक, एमई, MS तीनों इक्विवेलेंट डिग्री है. जो बीटेक लोग करते हैं उन लोगों का मास्टर डिग्री होता है एमटेक, IIT में BE होता है, उन लोगों का मास्टर्स होता है ME. ठीक है, और एब्रॉड, बाहर जो एडवांस कंट्री होता है, उधर क्या है, कोई इंजीनियरिंग टेक या इंजीनियरिंग डिग्री नहीं होता है, उधर सबका साइंस होता है. जैसे हम लोग इधर होता है ना BSc, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, तो उधर सब कुछ साइंस है. बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर, बैचलर ऑफ साइंस इन मैकेनिकल. ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ साइंस. ठीक है, जो सिर्फ फिजिक्स है दैट इज मोर नॉलेज में, जो कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल है, दे आर मोर टेक्नोलॉजी और स्किल बेस्ड. दैट इज द डिफरेंस, नथिंग एल्स. ठीक है, और इनमें से कौन सा करना है ये तुम्हारा चॉइस है. ठीक है, एमटेक करना है, ME करना है, MS करना है, और PhD करना है. लेकिन एक मिसकॉन्सेप्शन हमारे इधर था कि, और इंडियन सिस्टम में क्या होता है, इंडियन सिस्टम में टिल 2023
या कुछ साल अगर ऐड कर दे 2025 तक तुम बिना मास्टर्स करके पीएचडी नहीं कर सकते हो. आफ्टर बीटेक यू हैव टू डू आइदर एमई और एमटेक टू गेट योर एडमिशन इनटू पीएचडी. लेकिन जब एडवांस कंट्री होता है उधर तुम्हें अगर 12 के पास 4 ईयर वाला डिग्री है, जैसे बीटेक में होता है, ठीक है, जैसे बीटेक में होता है कि तुम्हारे प्लस 12 प्लस 4 ईयर डिग्री है, सो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर पीएचडी और एमएस. ठीक है, क्योंकि बाहर के कंट्री में एमएस और पीएचडी बोथ है ग्रेजुएट प्रोग्राम. बीटेक बीएस ये सारे चीजें होता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम. ठीक है, पीएचडी के लिए ज्यादा क्रेडिट चाहिए, एमएस के लिए कम क्रेडिट. नाउ इंडिया में भी अभी जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस किया है, जो हमारा बंगाल में भी लागू होने वाला है और थोड़ा पार्शियली लागू हो गया है. अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो जो 4 साल का डिग्री होगा उनमें से एक ऑप्शन है जो लोग थोड़ा बहुत रिसर्च प्रोजेक्ट करेगा 4th ईयर में जाके, दे कैन डायरेक्टली गो टू पीएचडी विदाउट एमएस or MTech, MSc. That means if you plan from the beginning, you don't have to go for MTech or ME before going to PhD. You can choose. Only thing is that MTech or MS is a little less credit course. PhD is more credit course. You have to spend little more time. That's it. But you don't have to go through it. Earlier in Indian system that you had, means you must go through MTech or ME or MS before you can get admission into PhD. But now the scenario when you will be passed out is different. In India also, you can directly apply for PhD without doing MTech or MS. Okay. And for Indian system, if you used to go for MTech, PhD, etc., you know that after BTech, you have to clear another basically exam like your JU appear after 12th, like GATE is or NET. Okay, such exams you have to clear. Then if you get chance according to your ranking, you can get chance in HIT, some other private university, government university, Jadavpur, Shivpur, or maybe in IIT, NIT. Okay, and accordingly, there you have to pay your tuition fee. Okay. You have to spend money. But in abroad, if we say that what about the foreign countries? In foreign countries also, there are always, the university and they will be happy to receive fund. So if you have lots of money, you can always go to, or take bank loan and go and study in abroad. Right? That's how our so-called, film stars, son and daughters, they go and study. Then if you plan from the beginning and spend little bit of your एक्स्ट्रा स्पेयर टाइम है ना, तुम्हारे जो टाइम हम लोग मस्ती में बिताते हैं, मोबाइल में बिताते हैं, व्हाट्सएप में बिताते हैं, या तो रील देख के बिताते हैं ना, उनमें से थोड़े बहुत अगर टाइम हम लोग ये सारे सोच के लिए रख देते हैं कि चलो हायर एजुकेशन कैसे है, क्या क्या करना है, देन यू कैन गेट to a system for higher study where not only you can get your tuition fee waived, but also you can get additional money for your support stay. मतलब तुम्हें कॉलेज का ट्यूशन फी देने के बाद भी तुम्हारे हाथ में इतने पैसा आएगा, सब खर्चा मतलब तुम्हारे रहने का, खाने का, स्पेंड करने के बाद भी you can go for save money and send it to your parents or for your luxuries. Okay. But क्वेश्चन जब ऐसे मैंने कहा कि चलो बाहर तुम्हें फेलोशिप, दिस स्कीम इज कॉल्ड फेलोशिप, कि अगर मुझे जाना है बाहर, মানে আমাদের যেসব বাঙালি স্টুডেন্টরা যদি থাকো, যে এইটা হচ্ছে আমরা বাইরে পড়তে চাইলে সব সময় বাবার পকেট কাটার দরকার নেই, শাহরুখ খানের ছেলে মেয়ে হওয়ার দরকার নেই, আম্বানির ছেলে মেয়ে, আদানির ছেলে মেয়ে হওয়ারও দরকার নেই। আমরা কিন্তু যেমন আম আদমি যেমন বলি যে সাধারণ মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে মেয়ে হয়েও কিন্তু আমরা শুধু প্ল্যানিং করে যদি আমরা জানি, সেই সামান্য একটু টাইম স্পেন্ড করে, মানে জয়েন্ট এন্ট্রান্সে যত পড়াশোনা করেছিল এতটাও দরকার নেই, সামান্য
রেগুলার এফোর্ট দিয়ে কিন্তু আমরা এরকম জায়গায় চান্স পেতে পারি যেখানে পড়াশোনার খরচ বাঁচিয়েও কিন্তু এতটা আমরা খরচ করতে পারি, মানে বাঁচাতে পারি, যেখান থেকে কিন্তু আমাদের फैमिली के আমরা सपोर्ट करते पारी, सेविंग्स करते पारी। ठीक है, सो मतलब क्या है कि बाहर पढ़ने के बाद पढ़ाई के साथ जो फेलोशिप मिलता है उधर से हम लोग सेविंग्स कर सकते हैं, सारा खर्चा बचा के। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आता है कि इसके बाद शायद वो तो आईआईटी से होता है, जो लोग आईआईटी में पढ़ता है वो करते हैं, क्या हम एचआईटी से भी ऐसा स्कोप है? इज इट पॉसिबल? आंसर इज यस। ठीक है, जैसे सिर्फ तुम्हारा जो चंद्रयान चंद्रयान जो 3 था या अभी सोलर मिशन हो रहा है, इधर ही नहीं, हमारे बहुत सारे एलुमिनी है एचआईटी का ही है जो बाहर से पढ़ाई नहीं किया, अभी बाहर पढ़ते भी है यूएस यूनिवर्सिटी में। देयर मेरा जो नॉलेज था टू आई थिंक 2018 और 19, आई थिंक देयर आर मोर देन 50 पीपल फ्रॉम एचआईटी जो लोग यूएस यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ाते हैं। ये बड़ा बड़ा कंपनी में कितने हैं वो तो मतलब बियॉन्ड काउंट। ठीक है, मेरा जो मैं एचआईटी था, मेरा टेन्यूर में भी आई नो स्टूडेंट्स जो एचआईटी से अभी यूएस में बीटेक करने के बाद गया हुआ है। ठीक है, दे आर इन टच विथ मी, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ कांटेक्ट किया था कैसे जाना है, मैंने तो जस्ट गाइड किया था, इट्स देयर एफर्ट कि दे हैव डन एंड नाउ दे आर इन यूएस। इवन लास्ट साल भी एक 2 स्टूडेंट गया है, अभी इस साल भी कुछ स्टूडेंट जाने वाला है। ठीक है, तो मेरे एचआईटी से और इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी है जिन लोगों को कैंपस में जॉब नहीं मिला, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिन लोगों को कैंपस में 2 ऑफर मिला है, छोड़ दिया, अभी वो लोग बाहर में हैं। ठीक है, एंड नॉट ओनली दे आर स्टडिंग, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी है जो सिर्फ 3 साल गया हुआ है, वो अपने मम्मी पापा को कलकत्ता में फ्लैट खरीद के दिया हुआ है। बिहार से एक स्टूडेंट है, वो तो बिहार में शायद 1 एकड़ के करीब जमीन खरीद लिया है, उधर कुछ बिजनेस उसको बनाना है। सिर्फ 3 साल भी नहीं हुआ है, ये लोग गया हुआ है, थोड़ा बहुत पैसा उधर से जमाया, जो डाउन पेमेंट करना है, बाकी बैंक से लोन लेके कर लिया। ठीक है, दे आर नॉट द टॉपर्स ऑफ एचआईटी बाय द वे। ओके, सो इट इज वेरी मच पॉसिबल। So again the same kind of question that I have already mentioned कि abroad अगर जाना है तो पैसा कौन देगा, और मेरा पेरेंट कितना दिन वेट करेगा कि आई आन। जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि यू डोंट हैव टू वेट। अगर तुम्हें प्लानिंग के साथ जाओ, अगर बिना प्लानिंग, कुछ प्लानिंग नहीं है तुम्हारे पास पहले से, तुम सिर्फ वेट कर रहे हो कि हाँ कब मुझे कैंपसिंग में जॉब मिलेगा, जॉब नहीं मिला तो अंधेरा है, तब मुझे कुछ करना है, चलो हायर स्टडी में जाना है, एमटेक करना है, देन यू हैव टू आई नो मैनेज मनी। लेकिन अगर लेकिन अगर ऐसा है कि यू आर प्लानिंग फ्रॉम डे 1 कि अगर हम, मेरे पास प्लानिंग मतलब ऐसा नहीं तुम क्लास छोड़ दो या बाकी सब कुछ छोड़ दो, उससे हायर स्टडी के बारे में सोचा, ऐसा नहीं है। मैंने जब बोला कि स्पेयर टाइम मतलब जो टाइम तुम वेस्ट करते हो उनमें से थोड़ा बहुत टाइम अगर तुम बचा के हायर स्टडी के बारे में सोचो जो है, तो देन दैट विल बी ओके। शुभंकर सर, if there are any question, you can just please note and I will answer them in the last part. Okay. Okay, sir. We are noting. हाँ सर। Okay. So next thing is, जैसे मैंने बोला था कि जो लोग सोचते हैं कि चलो मेरा दोस्त अगर जॉब मिल जाएगा, अगर उसको जॉब मिल गया तो वो तो चला जाएगा और उसको तो इंक्रीमेंट मिलता रहेगा, तो मेरा क्या होगा? तो इसके लिए मैं एक ही चीज बोलता हूँ स्टूडेंट्स को हमेशा, जब मैं क्लास में भी जाता था, कि बेटा लाइफ इज नॉट 100 मीटर रेस, जो एथलेटिक्स में होता है, ओलंपिक्स में होता है, जो जीता वही सिकंदर। हाँ, 100 मीटर पहले पहुंच गया, बस बल्ले बल्ले लाइफ इज सेट, ऐसा नहीं है। लाइफ अगर 100 मीटर रेस होता ना, तो हमारे इंडिया में तुम देखो बहुत मतलब हर दूसरे दिन सुनने को मिलता है कोई चाइल्ड प्रोडिजी आता जाता है, 10 साल में माध्यमिक या 12 साल में ऑनर्स पास हो जाता है। ठीक है,
लेकिन उसके बाद ना एक भी हम लोग आइंस्टाइन पैदा कर पाए, ना न्यूटन। हर दूसरे दिन हमें देखने को मिलता है कोई ना कोई इंडियन बच्चा कहीं से निकल जाता है जिसका आईक्यू आइंस्टाइन से 1.5 गुना होता है। लास्ट मतलब मेरा जब मैं स्टूडेंट था, लास्ट 20 साल से मैं ऐसा न्यूज हर साल 2-3 तो ऐसे इंडियन स्टूडेंट, चाहे वो देश में हो या फॉरेन कंट्री में हो, जिसका मम्मी पापा फॉरेन में जॉब करता है, ऐसा स्टूडेंट निकल ही आता है। मैंने मतलब बाकी देशों को तो छोड़ ही देता हूँ, लेकिन क्या ये उसके बाद एक भी इंडियन स्टूडेंट ऐसे एक्सेल किया? वो सारे स्टूडेंट पर लैटर हब में नहीं है। तो इसीलिए कहा, अगर सिर्फ ऐसा ही होता कि जो पहले अच्छा जगह पे मिल जाता है सिर्फ उसी में उसी को सक्सेस मिलता है, तो अभी अगर तुम देखो वर्ल्ड में जितने सारे बड़े बड़े कंपनी है ना, उसका जो सीईओ है बहुत सारे इंडियन है, चाहे जो सुंदर पिचाई हो या ऐसे बहुत सारे नाम, सत्य नडेला हो। लेकिन अगर इन लोगों का कैरियर देखोगे ना, ये सारे लोग इंडिया में ही पढ़ाई किए थे, कुछ आईआईटी में थे, कुछ तो ऐसा है जो अननोन यूनिवर्सिटी में, सारे आईआईटी नहीं था। लेकिन अगर तुम लोगों को अभी तो बहुत सारे रैंकिंग का टर्म पता चलेगा, नैक पता चलेगा, एनआईआरएफ पता चलेगा, ग्लोबल रैंकिंग पता चलेगा, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग क्लास में भी हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, इंस्टीट्यूट का भी ऐसा रैंकिंग है। अभी जो वर्ल्ड रैंकिंग है ना, हमारा इंडिया में एक भी तो टॉप 300 में 500 में आते नहीं है। तो अगर टॉप कंपनीज को सीईओ चुनना है तो इंडियंस क्यों लेते हैं, जो ऐसा इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया जो कोई भी रैंकिंग में नहीं है। अगर पहले कौन अच्छा इंस्टीट्यूट में पहुंचा या ऐसा ही अगर मतलब मेरा सिलेक्ट करने का ये होता, तो वो तो कहीं पे नहीं होते। इसीलिए क्या होता है बेटा कि तुम फिनिश कहाँ करोगे वो इम्पोर्टेंट है, कब कर रहे हो वो नहीं है। इसीलिए जो बेटर डिग्री के साथ, बेटर नॉलेज के साथ, बेटर स्किल के साथ ज्वाइन करेगा ना, सोचो कि किसी ने तुम्हारा सीनियर, एक तुम्हारा दोस्त 4 साल बाद कैंपस में 5 लाख का ऑफर मिल गया, अंदर 5 साल में ही और शी माइट रीच 15 लाख 20 लाख। लेकिन इसके बीच अगर तुम हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा कर लेते हो ना, तुम ज्वाइन ही 30 लाख 40 लाख 50 लाख या 1 करोड़ से भी शुरू कर सकते हो। तो नोबडी कैन मैच, ठीक है। तो यही तुमको ध्यान में रख, लेकिन हमेशा एक चीज में ध्यान में रखना है, चीज जैसे तैसे कर लिया ये नहीं है। अगर अच्छा करोगे तो, और जो हुई चीज वेरी मच पॉसिबल, जो तुम्हारा एचआईटी के सीनियर लोग ही करके दिखाया है। ऐसे नहीं है तुम आईआईटीएंस के देख रहे हो, तुम एचआईटी का ही। हमारे अगर तुम लोग जो कॉलेज में होगे, जो एलुमिनी का डेटा देखोगे ना, तुम चौंक जाओगे कि हमारा एचआईटीएंस क्या क्या किया है, ठीक है। ये सारे नाम मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं, सो आई एम नॉट गोइंग टू दैट। सो नाउ तो फिर हायर एजुकेशन में करना क्या है? तो पहले क्या है, मेरा माइंड को सेट कर, तुम्हें खुद को पूछना है कि ये जो प्रिपरेशन, इसका शुरू कहां से होता है? शुरू खुद को क्वेश्चन पूछने से शुरू होता है कि क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है, शुड आई गो फॉर इट, शुड आई नॉट, क्या मेरा ये भी एक हो सकता है कि से मैं जॉब पे फोकस करूं, ठीक है। लेकिन अगर एक सोचना है, ये देखना है, तो तुम डिस्कस कर सकते हो किसके साथ? तुम्हारे दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ। सारे डिस्कशन के बाद तुम अगर डिसाइड करते हो कि हाँ ये करना चाहिए या कर सकता हूं, तो ये डिसीजन के बाद और पीछे मुड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तब क्या चाहिए? सिर्फ डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन, ठीक है। और ये जो हायर एजुकेशन का जो फेलोशिप वगैरह है ना, इसके लिए कैसे प्रिपरेशन चाहिए? सिर्फ 6 से 9 महीने का प्रिपरेशन, वो भी अगर डेली तुम 3-4 घंटा प्रिपेयर करो तो। कोई ट्यूशंस नहीं चाहिए, कोई कोचिंग नहीं चाहिए, ठीक है। फिर भी यू कैन डू इट। और क्या करना है कि तुम्हारा पूरा जो बीटेक प्रोग्राम में है ना, तुम्हारा तुम ऑलरेडी है, तुम्हारा जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 8 सेमिस्टर आएगा, इस दौरान किसी भी टीचर के साथ, दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत रिसर्च प्रोजेक्ट जो होता है, तुम्हारा ऐसे ही 8th सेमिस्टर में है, लेकिन उसके पहले से ही कॉलेज में बहुत सारे सेमिनार होता है, एचआईटी में बहुत सारे टीचर रिसर्च करते हैं, बहुत सारे टीचर का रिसर्च फंडिंग है, अपॉर्चुनिटी है।
तो उन लोगों के साथ बात करके थोड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकते हो, सेमिनार में पार्टिसिपेट करते हो। तो ये जो एक्सपीरियंस है, जब तुम हायर एजुकेशन के लिए बाहर अप्लाई करोगे तुम्हें हेल्प होगा। ठीक है। सो नॉट ओनली दैट, ये जो यही हायर एजुकेशन के लिए हमारे HIT के साथ एक फॉरेन यूनिवर्सिटी जो ताइवान का है उसके साथ MOU है। ठीक है, जिसके नाम है मिंगची यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। शायद सामाओ ये मेरा स्क्रीन से बाहर हो गया, राइट? ओके, अभी स्क्रीन में, यस। सो ये एक मिंगची यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये ताइवान में है। तो तुम ताइवान सोच सकते हो, ताइवान सर कितना सर। तो इधर क्या है, क्योंकि हमारे साथ MOU है, तो जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं इन लोगों को फेलोशिप, फुल फेलोशिप मिल जाता है। फुल फेलोशिप में ट्यूशन फी वेव हो जाता है, उसके बाद रहने खाने के लिए मिलता है। अभी तक HIT से जितने सारे करीब 50 के आसपास स्टूडेंट गए हुए हैं, ऑल ऑफ देम आर एस्टेब्लिश। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं इंडिया में, कुछ लोग बाहर जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग HIT मतलब में ताइवान में ही PhD कर रहे हैं विथ फुल फेलोशिप, और कुछ लोग US में शिफ्ट कर गए PhD करने के लिए विथ फुल फेलोशिप। ठीक है। अगर किसी को इसके बारे में और जानना है, MCUT हमारा कॉलेज के साथ MOU है हमारा। अभी पहले मैं इसका कोऑर्डिनेटर था, अभी इसका कोऑर्डिनेटर है हमारा रजिस्टर सर, यू कैन आस्क। और इसका जो वेबसाइट है ये वाला है, एक मिनट आ गया, हाँ। इज इट विजिबल? Anupam sir, Yes, it is visible. you see this is the website with whom we have collaboration. This is the Mingchi University of Technology. If you forget, just put mcut.edu.tw। ठीक है। इधर जो है देखो, इधर इधर एक इसका एडमिशन करके एक टैब है। इफ यू क्लिक हियर यू विल कम हियर। Okay, so if you just click on the admission tab, this page will open. Okay, if you go to all the way to the bottom, then you see international students. This international students link is there, then you have to click here. Okay, then this application page will open, but right now it is not for you because you have to be in the final year or pass out to apply. Normally in abroad foreign country there are two sessions, spring and fall. Fall means the before winter, whenever the leaves sheds their old leaves, that season, that is during it starts the same time your semester is starting around August, September. But for it you have to apply before, like in the February to April window. Okay, every year, then they will select, okay, from your application, and there are procedure. If you go visit those website, you will get to see everything. Or anytime if you have in future also regarding any such question in mind, you can contact me. My mobile numbers are there with your teachers, you can just ask them। Okay, now इसके बाद आता है बाहर कंट्री के करने के लिए। स्पेसिफिकली सिंस आई वाज इन US, मुझे US के बारे में मैं बोलता हूँ, क्योंकि जर्मनी और यूरोपियन कंट्री में भी पॉसिबिलिटीज है, बट जर्मनी में थोड़ा दिक्कत यही है। जर्मनी में अगर तुम्हें फेलोशिप अर्न करना है, तुम्हें जर्मन लैंग्वेज जानना है। बिना जर्मन लैंग्वेज जाने तुम नहीं कर सकते। ओके, बट US इज द बेस्ट प्लेस, क्योंकि US का जो एटमोस्फियर है इंडियन लाइक एटमोस्फियर है। बहुत सारे इंडियंस है, फूड को लेके कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हमारे इंडिया में हम लोग जो भी खाते हैं, वेज नॉन वेज सारे चीज, अंडे से लेकर चिकन तक, फिश, सारे सब्जियां सब कुछ मिल जाता है, इंडियन स्टोर मिल जाता है। ठीक है, तो इंडिया US के में भी लिए बेसिकली तुम्हें अगर पढ़ना चाहते हो, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज होते हैं। ठीक है, उधर भी जैसे मैंने बोला फॉल और स्प्रिंग सेमिस्टर है, ज्यादा से ज्यादा फॉल सेमिस्टर में जाते हैं। लेकिन US के लिए अगर जैसे ताइवान में मैंने बोला, अगर फॉल सेमिस्टर मतलब अगस्त सितंबर से शुरू करना है, तुम्हें उसी साल का फरवरी और टू अप्रैल विंडो में अप्लाई करना है। लेकिन US में पढ़ाई करने के लिए सोचो, अगर तुम्हें 24 में जाना है तो
2023 का अक्टूबर नवंबर दिसंबर उन लोगों का एप्लीकेशन विंडो खोलते हैं, उधर एप्लीकेशन करना पड़ता है। जनवरी टू मार्च के अंदर रिजल्ट निकलता है, तुम्हें अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद वीसा वगैरह प्रोसेस कंप्लीट करके जाना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, रिक्वायरमेंट्स क्या होता है ना, तुम्हारा जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स वो चाहिए होता है, एक सीवी बनाना पड़ता है, और एक एग्जाम होता है जिसको जीआरई बोलता है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके साथ एक इंग्लिश टेस्ट लगता है, टोफेल, क्योंकि हम लोग ऑफिशियली नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, बाहर तुम्हें इंग्लिश में पढ़ना है, उसीलिए जीआरई का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। ये सिर्फ इसमें दो होता है, एक जनरल जीआरई, एक सब्जेक्ट जीआरई। जनरल जीआरई में मैथ्स और इंग्लिश रहता है, मैथ्स 8-9 स्टैंडर्ड का रहता है। ठीक है, तो अभी टोफेल है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज। ये सारे इवन जो हमारे स्टूडेंट अभी गया है, ऐसे भी स्टूडेंट्स है जो बंगाली मीडियम और हिंदी मीडियम से है, जैसे मैंने कहा है 5-6 महीने का प्रिपरेशन इज मोर देन सफिशिएंट। फॉर दैट देयर विल बी लॉट्स ऑफ थिंग अवेलेबल इन इंटरनेट, और कुछ बुक्स भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये और एप्लीकेशन करने के लिए भी फी बहुत कम है, 50 से $100 के करीब लगता है। जीआरई साल में बहुत सारे बार एग्जाम होता है, ऑनलाइन होता है, यू कैन चूज योर डेट। ठीक है, एक बार जीआरई स्कोर कर गया तो वो 5 साल तक वैलिड रहता है। तो क्या है कि अभी तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि अभी तुम्हें जीआरई में नहीं बनना है, क्योंकि तुम्हें 4th ईयर तक वेट करना है, राइट। बट अगर तुम्हें एक बार माइंड में ले लिया क्या जीआरई है, तुम बीच बीच में थोड़ा बहुत करके देखते रहोगे, आधा घंटा, ठीक है, वीक में 2 घंटा, तो ऐसे ऐसे करते तुम जब 3rd ईयर में जाओगे ना, तुम्हारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तुम 3rd ईयर में जीआरई टोफेल क्लियर करके रख सकते हो, 4th ईयर में तुम अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि तुम 4th ईयर में तुम्हारा कैंपसिंग के लिए पूरा जोर डाल दो, तब कैंपस में हो गया तो ठीक है, लेकिन तुम रियली फोकस्ड हो हायर स्टडी के लिए, देन गो। और ऐसे यूएस में अगर जनरल जो अभी हायर स्टडी करने के लिए जो मिलता है ऑफर, जो लास्ट जो स्टूडेंट गया हुआ है उसको जो मिल रहा है उसका, हाँ, वो मॉरलेस उसका जो अगर 5 साल लगता है उसको पीएचडी करने में, यूनिवर्सिटी उसके पीछे 20 करोड़ से ज्यादा खर्चा करेगा, मोर देन 20 करोड़। उनमें से उसका जो पूरा ट्यूशन फी है वो फुल वेव कर दिया, उनको एक पैसा भी नहीं देना है, और उसका जो रहने और खाने के लिए उसको हर महीने लगभग $4,000 देता है। और उसका खर्चा वो जो स्टूडेंट्स है वो थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर करके रूम में रहता है और खाना खुद बना लेता है, तो इसीलिए उनका खर्चा आता है अभी अराउंड $600 खर्चा पड़ता। तो कुछ लोग और अगर कॉस्टली टाउन भी हुआ तो ज्यादा से ज्यादा $1,000 से $1,500 खर्चा होगा। सो मतलब करीब $2,000 से $3,000 तुम्हारा टैक्स फ्री सेविंग्स हो सकता है। अभी डॉलर को इंडियन में कन्वर्ट करना तुम लोगों को आता है, कन्वर्ट करके देख लो कितना पैसा जमेगा। ठीक है, जीआरई प्रिपरेशन के लिए ये कुछ गाइडलाइंस है, अगर तुम लोगों को जरूरत है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई कैन शेयर दिस विथ यू, जिसको भी चाहिए। ठीक है, या तो तुम जस्ट गूगल है ना, गूगल मामा को पूछ लो कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीआरई। ठीक है, देयर विल बी लॉट्स ऑफ कोचिंग सेंटर, डोंट गो फॉर इट। कुछ बुक्स है जैसे कफलान का बुक्स है, बैरोन का बुक्स है, वो खरीद सकते हो, अमेजोन से मिल सकता है, या तो ये ऑनलाइन ही बहुत सारे जगह मिल जाता है जहां पर तुम्हें फ्री कोचिंग मिल सकता है, फ्री टेस्टिंग मिलता है। ठीक है, यू कैन गो फॉर देम। ठीक है, लेकिन ये सारे चीज तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम्हें 10 घंटा पढ़ाई करना है इसके लिए। अभी से अगर सोच रहे हो कि चलो फर्स्ट सेमिस्टर नहीं करना है, फर्स्ट सेमिस्टर अभी तुम्हारा एडमिशन होगा, 2 महीने में तुम्हारा एग्जाम होगा, बहुत सारे टेंशन है, भूल जाओ। लेकिन करना है कि नहीं, हायर एजुकेशन में जाना है कि नहीं, वो सोचते रहो, थिंक अबाउट दैट। ঠিক আছে, এটা ভাবো যে তুমি হায়ার এডুকেশন করতে যাও কিনা, যেতে যাও কিনা, দ্যাটস ইট। তোমার আইআইটিএন হওয়ার দরকার নেই। देन फ्रॉम द सेकेंड सेमिस्टर ऑनवर्ड्स थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, जब बोरिंग लग रहा है क्या करना है यही सोच में, जब ऐसा भी टाइम आता है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, क्या करना है, दोस्त भी नहीं, मूवी भी नहीं देखने जा पा रहा हूँ, कोई खेलने नहीं जा पा रहा हूँ, तो क्या करे।
जस्ट गूगल मामा के पूछो, देन जस्ट गो थ्रू इट. तुम्हारा मोबाइल है, तुम्हारा हाथ में हो, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. ओके, देन ये कुछ सेक्शन है कि कैसे करना है. ठीक है, कैसे कैसे पॉइंट्स स्कोर करना है, कहाँ कितना पॉइंट है. ये भी जस्ट सिंपल मीन्स तुम जस्ट गूगल से पूछने से ही मिल जाएगा. ठीक है, और इसके टोफेल के लिए क्या होता है, टोफेल का प्रिपरेशन में बेसिकली सारे इंग्लिश स्किल का टेस्ट होता है. लिखने का स्किल होता है, बोलने का स्किल होता है, सुनने का स्किल होता है. ठीक है, तो इसमें व्हाट यू हैव टू डू हियर इज दैट यू हैव टू, तुम्हारा अभी क्या है, पहले बहुत डिफिकल्ट था, अभी तुम गूगल में किसी भी वर्ड टाइप करोगे तो उसका इंग्लिश मतलब ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, उसके साथ यूएस प्रोनाउंसिएशन मिल जाता है. ठीक है, जस्ट गो थ्रू द यूएस प्रोनाउंसिएशन. अभी बहुत सारे तुम्हारा हॉलीवुड मूवी मिलता है, तुम्हारे पास सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है. ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा यूएस एक्सेंट जो है उसके साथ कंफर्टेबल होना है, सुन के आंसर देना है, बोलना है कुछ चीजों को. तो यही टेस्ट होता है. इसके भी 3-4 महीने का प्रिपरेशन मोर देन सफिशिएंट होता है. और लाइव इजी हो गया क्योंकि हमारे पास एक मोबाइल है जिनमें सारे सॉफ्टवेयर, आज से 15-20 साल पहले लोगों को वो सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता था जहां पर लोग प्रोनाउंसिएशन सुन सकता था, वो खुद बोल सकता था. ठीक है, अभी जरूरी नहीं, सब कुछ फ्री में मिलता है. ठीक है, उसके बाद कुछ मतलब जब व्हेन यू आर इन द 4th ईयर स्टेज, तुमको उसके लिए प्रिपरेशन के लिए किसी थोड़ा एक टीचर गाइड होता है, क्योंकि तुम 2-3 रिकमेंडेशन लेटर लिखना पड़ता है. व्हाई यू वांट टू गो फॉर हायर स्टडी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक लिखना पड़ता है. वो भी ऑनलाइन में बहुत सारे सैंपल कॉपी मिल जाता है, उसको देख के तुम कर सकते हो. और देयर आर लॉट्स ऑफ यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल बेसिकली, जहां तुम ये सारे यूट्यूब चैनल देख सकते हो, जहां तुम्हें गाइड किया जाता है कि कैसे जीआरई देना है, कैसे टोफेल देना है, यूएस में कैसे अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी चूज करना है कैसा है. ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें गाइड ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल से मिल सकता है. ओके, बाकी इतने टाइम मुझे झेलने के लिए थैंक यू. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है डायरेक्टली पूछ सकते हो, या शुभंकर सर या अनुपम सर, मुझे किसी का स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है सर बोल सकते हो. आई थिंक आई एम ऑन टाइम राइट. Yes, Yes, sir. sir. Before time. ओके सर. Yes, you are on time and there are a lot of questions actually. सर, अगर जो I जो think इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से आप बोल सकते हो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देम सर. sir, there is one question from Anupam sir. Can we join for PhD in US without having MTech degree? Yes, yes. You don't need MTech MS directly. Those who have 4-year कोर्स, मतलब 3 ईयर, अगर हम लोग जनरल डिग्री कर रहे हैं तो नहीं होगा, तो हमें एटलीस्ट मास्टर डिग्री फर्स्ट ईयर चाहिए. एमएससी कंप्लीट, एमएससी या एमटेक कंप्लीट भी नहीं करना चाहिए, जरूरत है सिर्फ पार्ट 1 का अगर रिजल्ट है किसी के पास वो अप्लाई कर सकता है. लेकिन इंजीनियरिंग स्टूडेंट क्योंकि ऑलरेडी वो 4 साल का है, तो दे डोंट नीड एमटेक, दे डायरेक्टली दे कैन गो फॉर पीएचडी. अब इवन इंडिया में भी 3-4 साल बाद हो जाएगा. हमारा जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है उसके हिसाब से जो लोग रिसर्च प्रोजेक्ट करेगा फाइनल ईयर में, दे कैन डायरेक्टली चूज पीएचडी. So another question, I think Ms. Bose, what do we do for go abroad? Please clear this at the end of the session. This different question. Okay, sir. Can you please repeat the question? एक मिनट. What we should do for go to abroad? Okay. मैंने अभी दिखाया तुम लोगों को. एक तो तुम अगर देखो, मैं हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ कि तुम फेलोशिप लेके बाहर जाओ. ताइवान एक ऑप्शन मैंने हम लोग ऐसे इसलिए किया था क्योंकि जस्ट स्टूडेंट लोगों को ये बिलीव लाने के लिए कि हम लोग जा सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर तो यूएस में जाना चाहते हो, इसके लिए सब जीआरई और टोफेल तुम्हें क्लियर करना है. ठीक है, जीआरई टोफेल, जीआरई जो है वो उसका जैसे 2 टाइप का जीआरई होता है. एक जनरल जीआरई जो सबके चाहिए, इवन जो यूएस स्टूडेंट है उसको भी. कोई भी स्टूडेंट अगर अंडर ग्रेजुएट मतलब बैचलर लेवल कोर्स करने के बाद मास्टर लेवल या पीएचडी लेवल करना चाहते हैं तो उसको एक एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें मैथ से रीजनिंग मतलब हर एक, चाहे वो लिटरेचर हो, हिस्ट्री हो या साइंस का हो, सबको रीजनिंग चाहिए, कंसेप्ट चाहिए. इसीलिए मैथमेटिक्स है, दैट इज इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स, जो 8-9 स्टैंडर्ड का भी नहीं होता है, उससे भी कम होता है.
नॉर्मली जो इंडियन स्टूडेंट है वो 170 मैथमेटिक्स में 170 ही स्कोर करता है, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस करना है, जल्दी जल्दी कैसे करना है। और इंग्लिश भी जो है वो कुछ टिपिकल इंग्लिश उसका गाइडलाइंस है, उसको मतलब स्टॉक ऑफ वर्ड्स वगैरह ऐसे वो प्रैक्टिस करेगा तो हो जाता है। नॉर्मली मैंने HIT से जो स्टूडेंट देखा है 340 में से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखा है जो 300 इवन 330 भी HIT से ही स्कोर किया है, ठीक है। और एक टोफेल बोल के एग्जाम देना है, ठीक है। ये दो एग्जाम इज नेसेसरी टू अप्लाई, और तब जब तुम फाइनल ईयर में रहोगे तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर तुम्हें 24 में उधर ज्वाइन करना है तुम्हें 23 का जो नवंबर यू हैव टू अप्लाई इन 23 1 ईयर इन एडवांस, ठीक है। इसके लिए तो यू हैव टू क्लियर GRE टोफेल, और फेलोशिप मिलने का चांस बढ़ जाता है। यू विल गेट the scope of getting fellowship more if you have some kind of research experience during your BTech. If you work with some teacher on some research projects, participate in some seminar workshop, you may not need to publish in journals. If you can do that, will be very good. From HIT itself, lots of students do research with teacher, they publish even in journals. Okay, that is possible. So that will enhance your chances of गेटिंग बेटर फेलोशिप। अमाउंट बढ़ जाता है। जो एक ही स्टूडेंट अगर इसका एक का रिसर्च एक्सपीरियंस है, एक का नहीं है, अगर एक ही मतलब चांस है तो जिसका रिसर्च एक्सपीरियंस है उसको मिलता है, दो है तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा जिसके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है। Yes, sir. So another question for Abhinav Maiki: when is the right time to prepare for GATE exam? From day one. If you wish Actually, to prepare, sir, I just want to add one thing. There are actually means quite a few questions about this GATE and doing MTech in IITs. So you can actually club them together and answer. Okay. Now for GATE exam, basically you see, unless you pass your BTech, you cannot go for MTech, right? But for the preparation itself, because GATE is subject based, right? So from the preparation itself, first thing you have to do is download the GATE syllabus. It's available in internet. Download questions. Okay, last 10-year questions. Then what you have to do, as soon as you start a semester, look at the GATE syllabus. Is there any paper common? ठीक है, इज देयर एनी पेपर कॉमन विद द गेट सिलेबस? अगर है तो उस पेपर के अच्छे से पढ़ाई करो। सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए देखो, इंजीनियरिंग एग्जाम और गेट एग्जाम दोनों डिफरेंट है। इंजीनियरिंग एग्जाम इज लाइक ए स्किल, हाउ टू स्कोर। अगर मुझे बहुत सारे नॉलेज है फिर भी मुझे मार्क्स नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट है पढ़ाई कम करते फिर भी मार्क्स मिल जाता है, क्योंकि एग्जाम में स्कोर करना भी एक स्किल है, ठीक है। लेकिन वो स्किल तुम्हें ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बचाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम्हें इन डिटेल्स पढ़ना है, सिलेक्टिव पढ़ने से नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे एक के बाद एक सेमिस्टर आएगा, तुम्हारे पास जो सिलेबस रहेगा तुम उसको सिलेबस के हिसाब से उस पेपर को प्रिपेयर करके रखो। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही तुम्हारा फाइनल टाइम आ जाएगा, तुम 4th ईयर में गेट के लिए अपियर करोगे ना, तब तुम्हारे पास सब कुछ है। जस्ट 2 महीने में उसको रिवाइज करो और एग्जाम में दे दो। जैसे सोचो तुम लोग जब ज्वाइन में दिया, अभी क्या है, आज से कुछ साल पहले 11 12 मिला के तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हुआ करता था, लेकिन अभी 11 का सिलेबस 11 में खत्म हो जाता है, 12 का सिलेबस 12 में खत्म हो जाता है ना। लेकिन उसके बाद 12 का बोर्ड एग्जाम के तुरंत 1 महीने बाद तुम्हारा ज्वाइन होता है। तो तुम तो उधर 11 का भी सब्जेक्ट याद किया था। अगर 11 ठीक से पढ़ा नहीं होता, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तुम्हारा ज्वाइन में कभी भी रैंक अच्छा नहीं होगा। जो लोग तुम्हारा IIT में मिला, एडवांस में मिला, दोस्त ना, वो सिर्फ 11 का चीज अच्छा से याद करके रखा था, इसीलिए। सो दैट मीन्स इफ यू विश टू प्रिपेयर फॉर गेट, योर स्टार्टिंग टाइम शुड बी नाउ। यू जस्ट डाउनलोड द सिलेबस। तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट में आया हो तुम, तो तुम्हें पता है इसी सब्जेक्ट में मुझे गेट देना है, उस सब्जेक्ट में गेट का सिलेबस इंटरनेट में सर्च करो, डाउनलोड करके रख दो। उसके बाद जैसे ही तुम्हारा एक एक करके सिलेबस सेमिस्टर शुरू होगा, उसका सिलेबस तुम्हारे पास रहेगा। कौन सा कॉमन पेपर दोनों में देख लो, वो सारे पेपर को थोड़ा सा डिटेल्स में स्टडी करो, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन बैंक, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग आंसर इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें
क्वेश्चन नहीं पता होता है। एग्जाम के बाद बहुत सन में देखा है हम लोग, अरे ये आंसर तो मुझे पता था यार, लिख नहीं पाया, क्योंकि क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया था। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10 साल 15 साल का अगर एक तुम्हारे पास क्वेश्चन है, उसके अगर आंसर तुम के देख के जाओगे ना, एग्जैक्टली वो क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन 80% मोर और लेस कॉमन के आसपास तुम्हें गेट में मिल ही जाएगा। ठीक है। Sir, another last question I think that one Aditya Kumar Somani said that US में PhD के लिए master important है क्या? Directly after BTech we can go for that. No, I have already answered. यूएस में पीएचडी Yes, के sir. लिए मास्टर जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आफ्टर बीटेक यू कैन गो। ओके। Like sir, Hong Kong Manna said that how can we contact you? Can you share your email ID or whatever you could? Yeah, I think, sir, you guys can share my email ID and my WhatsApp number. So if you wish to, put any question, just it's better that you send me in WhatsApp first, introduce yourself, because right now I am not in HIT, so I will answer. Okay, maybe that you may not get the answer at the within 5 minutes or 10 minutes, but if you put your question in WhatsApp, I will definitely answer. And please, I think WhatsApp I will prefer. Email sometimes there are so many emails come. Sometimes they get overlap with lots of things. Then hardly we refresh. Okay, so it's better mode is the WhatsApp number. Okay. If you have any valid question, just introduce yourself, sir. I am from HIT this batch. I have this question. Then put your question. I will get back to you. If I need to call you back, I will call you back. Or if I just can answer, put type, and then I will type the answer and send it. Yeah, sir. Excuse me. Yeah, sure. From the students' side as well as from the faculty side, and since you are you have stayed here for around 10 years here, so many of the students are asking the question that whether HIT provides the facility or like guidance for GATE and any other exams. So, from your perspective, what you think, or you can say something so that students will be like benefited with that. Sure, Yeah. sure. Thank you, sir. Okay. Now regarding this question, like the facility you are asking for, if you are looking for coaching, the answer is no. Because if once you will be in HIT, you will be amazed to see that if you need guidance from the teachers are available almost 24/7 type. Like your class may be 3 hour, 4 hour, the teachers will be there from 9:30 to 6 o'clock. Okay. So what you need to do, you need to spend your time, हाँ बोलो. mark the specific areas where you have problem, go बोलो. to the respective teacher, they will be happy to help you. ठीक है, बट क्योंकि अगर HIT से तुम ठीक से पढ़ाई कर रहे हो, टीचर के पास जाते हो, तो तुम्हें जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कि अरे टीचर लोग हो तो बोलता रहता है, इनके पास जाना ही नहीं है, ये तो HIT का टीचर है, कितना अच्छा होगा। ठीक है, you can think about that mind. Then you think about you are also in HIT, right? And the second thing is that you might see that every year lots of our teacher, like you guys after 4 year, you leave the college and go for your, better opportunities in your career, maybe job, higher education. Similarly, you see that most of the faculties in HIT, they are as good as, IITians, faculties in IIT, or maybe sometimes even better. Okay? So you have to utilize those teachers. You have to go to them. ठीक है, यस, जैसे मैंने कहा था ना कि तुम्हारा क्वेश्चन बैंक तुमको करना, ये फॉरगेट अबाउट दोज काइंड ऑफ लाइक बाइजूज और समथिंग आनंद. नो, you don't need. What you need to do is that you have 4 year in ahead, prepare slowly, steadily, and for that whatever syllabus, like जैसे मैंने कहा, चलो सेमिस्टर सेकंड सेमिस्टर में तुम्हारा एक पेपर है, कुछ भी एक पेपर जिसके साथ तुम्हारा गेट का सिलेबस पे 30 से भी कम है, तो उस पेपर का जहां जहां में तुम्हें डाउट है, इवन बियॉन्ड द क्लास, अगर तुम्हारा एक जो हमारा HIT का जो सिलेबस है उस पेपर में सारे चीज नहीं है, लेकिन एक गेट में कुछ एक्स्ट्रा है, तो वो जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको लेके तुम उस टीचर के पास जाओ, दे विल बी हैप्पी टू असिस्ट. एंड ऐसा ही होता है, ऐसे करता है. ठीक है, अभी क्या है कि कुछ लिमिटेड स्टूडेंट ही आता है, जैसे जो अनुपम सर ने क्वेश्चन पूछा है,
मैंने तो ऐसे एक भी दिन नहीं देखा कि अनुपम के सर के टेबल में कोई स्टूडेंट है नहीं, ठीक है। लेकिन क्या है कि वो नंबर कम है। हमारे इस साल मुझे जितना पता है कि ऑलमोस्ट 1400 से ज्यादा स्टूडेंट एडमिशन हुआ है। आता है 2 3 4, जिसका जरूरत आता है तो सर फुलफिल करते हैं, ठीक है। ये तुम्हें अगर भूख लगा है ना, तुम्हें खाना के पास जाना है, खाना तुम्हारे मुंह में नहीं आएगा, ठीक है। सो दैट इज माय आंसर। द HIT इज सेल्फ सफिशिएंट टू असिस्ट यू, बट यू हैव टू टेक द हेल्प, ठीक है। तुम्हें उधर पहुंचना है, टीचर लोगों के पास पहुंचना है। एनीथिंग Thank you, एल्स sir. सर? No, sir. There is no question, sir. Actually, a lot of question I have already solved the answer for, as you given the valuable time for us, sir. You were wonderful knowledge, sir, and Yeah. giving So opportunity already sorry for there. interruption, sir. It's already 5 minutes past 2, but and there might be many questions of the students. So what the students can do, they can ask the questions to their mentors as well. The mentoring class is there to clarify their doubts, or even they can contact any of us. So, as Soumitra sir already said that we are open to all of you. You can come any table. The teachers are there to help you. Just you have to take one step ahead, and you have to come to this teacher. Then teacher will be going for 10 steps to satisfy your queries and all. Okay. And once again, thank you so much, sir, from our side. And now I hand over the mic to Biman sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for giving us and giving it a valuable knowledge, and we gap gain different dimension of the knowledge, education in USA, and student benefited. We are already benefited also, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, and Yes, sir. have a nice day, everybody. Yes, sir. Okay, sir. Bye. Yeah, Okay. thank you. So, those dear students, we are going to meet tomorrow again with the yoga session at right at 6 a.m. So, till then, 7 a.m. 7 a.m. sorry, 7 a.m. And sorry for that. Yeah, and till then, if any more announcements are there, so that will be shared by your mentors, and the day schedule also will be shared by your mentors. So please keep following your uh, WhatsApp groups, and it will be, and also the Telegram group. It will be shared simultaneously. Thank you.